Hello. Welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. और yes, मैं बोल तो रहा हूँ यार, fan channel for all to see, all to see. अभी यार आए नहीं ये लोग क्योंकि yes, I am before time. Yes, I am before time. मैं plan कर रहा था यार, I'll go live in a few minutes. But I thought anyway, let's go live. भाई काफी सारा उबल रहा है अंदर, तो बाहर आना जरूरी है, रुकना ही नहीं. More than that, I have to discuss with you all. Hopefully भाई सब लोग जो भी देख रहे हैं, आई नो दैट काफी लोग काइंड ऑफ बिजी होंगे. इट्स अ मंडे, और मंडे भाई टॉक अबाउट मंडे. मंडे वापस आ गया, तो ट्रांसफर स्टोरीज तो बहुत सारे आते हैं, और इसीलिए हम रैंडम स्ट्रीम्स करते हैं. रैंडम नहीं, लेकिन फॉर एवरीवन जो रेगुलर है चैनल पे, सब लोग जानते हैं भाई, वी ऑलमोस्ट स्ट्रीम डेली एट अराउंड दिस टाइम. हाँ, एक चीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सब लोग से, बिकॉज मैं वापस से रिपीट भी करने वाला क्वेश्चन, बिकॉज वंस आई हैव मेनी पीपल, मे बी आई गेट अ बेटर आंसर. लेकिन एक तो यार भाई, मैंने एक वीडियो रिलीज की थी ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस. बिग अप टू श्रेय पाटिल एंड बिग अप टू टीसीएसबी भी, क्योंकि यार हमने हाइलाइट्स किया था ऑफ द हु एम आई, जो आप लोगों को बहुत पसंद आया था. लेकिन फॉर सम रीजन दैट वीडियो डिड नॉट फेच मेनी व्यूज, सो आई डोंट नो वेदर इट वाज बिकॉज ऑफ द टाइमिंग जो मैंने रिलीज किया, कि यू डिडंट लाइक समथिंग अबाउट इट. तो यार फीडबैक ऑलवेज ऑन, बिकॉज आप जानते हो भाई, मैं अकेला ही चला रहा हूँ चैनल अभी. और अगर फीडबैक मिले तो बहुत ही बढ़िया है. आप डीएम कर सकते हो मुझे ऑन इंस्टाग्राम एब्सोल्युटली. और हाँ, किस टाइम पे आप चाहते हो कि यार मैं स्ट्रीम करूं, बिकॉज लेट्स गेट इट राइट. डेफिनेटली आई एम लुकिंग एट यूट्यूब एट अ फुल टाइम थिंग. तो अगर आप लोग का सहारा रहे, नो व्हाट हैज बीन डेफिनेटली इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, होपफुली विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स एंड मोर. तो हमें डेफिनेटली चाहिए. तो यार सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, भूलना मत. और यस, टू कमेंट, नीड टू सब्सक्राइब, बिकॉज गाड़ी वैसे ही चलती है आगे. लेकिन यार टॉक अबाउट ट्रांसफर स्टोरीज, तो इसलिए ये तो आना ही था. एंड यस, हम कभी दो तीन स्ट्रीम्स ही करते हैं डे. तो हाँ, काफी सारा कंटेंट है आपके पास, तो यू वोंट गेट बोर्ड, ट्रस्ट मी ऑन दैट. एंड वी ऑलवेज ट्राई एंड टेक द कमेंट्स. अगर बहुत सारे लोग हो तो यार ऑब्वियसली देयर इज अ सुपर चैट फैसिलिटी, लेकिन फिर भी यू नो दैट वी ऑलवेज ट्राई एंड टेक कमेंट्स, क्योंकि हमें इंटरेक्टिव शो रखना चाहते हैं, ऑलवेज. दैट इज राइट. एंड बिग अप टू एवरीवन. अमे इन द हाउस. अमे, हाय भाई, कैसे हो? और यस यार, जो भी ज्वाइन कर रहा है भाई, सब लोग अपना क्लब भी बता दीजिए. उस क्लब के बेसिकली वी विल डिस्कस ट्रांसफर स्टोरीज. ठीक है, तो सब लोग अपना अपना क्लब बता दो, विच क्लब डू यू फॉलो इन यूरोपियन फुटबॉल, और उस हिसाब से हम वी विल डिस्कस. एंड यस, doesn't take a buck. Like, subscribe, as I always say. Jaskar in the house as well. Hello Ankit bhai, hello as well. Maguire will be captain. दानिश. चलो भाई, मतलब अगेन आई वेट फॉर द चेल्सी फैंस टू कम, क्योंकि दानिश मुझे पता है एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, और बता भी रहे. काफी चीज निकली भाई, काफी चीज निकली फ्रॉम एरिक टेन हाग प्रेस कॉन्फ्रेंस. मुझे एंटिसिपेटेड नहीं थी, मतलब टू बी ऑनेस्ट. यस, इट इज एरिक टेन हाग फर्स्ट काइंड ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस प्री सीजन के लिए. लेकिन यार एट द सेम टाइम भाई, ही हैज डन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बिफोर इन द रीसेंट पास्ट. So it's kind of surprising कि इतने सारी चीज निकले in a pre-season press conference, and we'll come to that absolutely, Danish. Yes, Danish, yeah, on Ronaldo as well. There is a theory, मैं बताऊंगा आपको, सबको मालूम है. There is a lot of logic, and of course I have my own sources, but definitely there's a lot to discuss. And yes, Barcelona भाई, Barcelona is going to be the central focus of discussion आज, along with Chelsea and Manchester United and a few other clubs as well. हमें यस, बार्सिलोना बिल्कुल भाई. अंकित भैया बिग अप, पार्थ बिग अप भाई, सब लोग. और भाई सब लोग कर लीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, सो दैट वी हैव मोर पीपल, वी कैन स्टार्ट द प्रॉपर डिस्कशंस इन एंड आउट. और क्या बढ़ रहा है यार. और अगेन फॉर पीपल जॉइनिंग लेट, मैंने एक रिक्वेस्ट भी किया है भाई, सब लोग ये भी कमेंट डाल दीजिए, व्हाट टाइम डू यू वांट मी टू स्ट्रीम जनरली, क्या टाइम बेस्ट है आपके लिए टू फॉर मी टू स्ट्रीम. और सब लोग भाई बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिए, बिकॉज वी आल्सो रिलीज शॉर्टर वीडियोस. तो हमने एक रिलीज किया था ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बिलो. यार फॉर सम रीजन आई डिडंट गेट एनी व्यूज, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्या टाइम में रिलीज करूँ वीडियोस. एंड एनी अदर फीडबैक यू हैव, डेफिनेटली भाई कर लीजिए, और डीएम भी करिए. लिवरपूल बट नेवर एक्टिव. ओके, फेयर इनफ आदे, नो प्रॉब्लम, एंड ऑलवेज गुड टू सी यू ब्रो. See, I might be wrong. You don't have to be vocal to be a captain. For example, David Silva. Okay. Hello, Ankit Bhaiya, currently in the house. Sebastian in the house as well. Always good to see you, bro. And Raphinha to Barca, done deal. Ten Hag and Tuchel come. Well, Arif Shah is just kind of, trying to spam the subject line for whatever reason. Arif Shah, भाई मत करिए यार, मत करिए, स्पैम मत करिए. इससे पहले कि मैं ब्लॉक कर दूं आपको, तो प्लीज मत करिए. आई डोंट थिंक यू हैव एनीथिंग टू गेन वहां पर. ठीक है. I wanted Diha or Bruno to lead, but Maguire, yes. Hello to Swastik as well, and yes, of course. Again, so chalo theories by Farhan is also there. Well, let's see, Farhan. I have a lot of
a lot of things to discuss वहां पर definitely भाई. Big up Vishal as well. और चलो दानिश बोले 9 to 11 और इज हाई टाइम और you'll get more watches. Well, again सब लोग वो बता दीजिए कितने समय हमें करना है लाइव और वीडियोस भी कितने समय हम रिलीज करें, बिकॉज आई लिटरली कीप वेटिंग कि भाई कब कब रिलीज करूं, कब मैं लाइव आऊं, बिकॉज आई यू नो दैट आई एम ओके विद यू ऑल. इट्स अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी. तो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड से क्या निकला, और यस विल कम टू बार्सा, चेल्सी एंड ऑल दी क्लब्स, राइट. मैनचेस्टर यूनाइटेड क्यों, क्योंकि यार आज हुआ है बड़ा बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस. तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या, हाँ बड़ा इन टर्म्स ऑफ नॉट इन टर्म्स ऑफ कितना लॉन्ग हुआ लेकिन एरिक टेन हाग ने किया है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस. तो पहले तो भाई सबसे पहला क्या पूछा गया भाई इज द फैक्ट दैट यस इट इज लिवरपूल, इट्स अ लिवरपूल फ्रेंडली कल. तो भाई एवरीवन इन द हाउस, थाईलैंड में होने वाला है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल, और वहां पर क्विकली लिवरपूल फैंस के लिए भाई दिस इज अ न्यूज एज वेल. डार्विन नूनेज रिपोर्टेडली इज इंजर्ड. यहाँ डार्विन नूनेज इज इंजर्ड, लेकिन भाई उसका इतना बुरा इंजरी नहीं है एज फर्स्ट एंटिसिपेटेड. तो यार मैक्सिमम आई थिंक मे बी 10-15 दिन होंगे बस. तो 10-15 दिन बाहर होंगे डार्विन नूनेज. दैट इज नॉट अ गुड न्यूज. और अगेन एनी लिवरपूल फैंस को पता है इफ इट्स रियल, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स, so looks like it's real. लेकिन हाँ 10 to 15 days is what I'm looking at. What else? What else? So Ten Hag on Ronaldo. Definitely that's the news. So he's not with us. That's due to personal reasons. And as per reports again, ठीक है, as per reports क्या है? Supposedly, possibly his mother is not feeling well. So definitely it makes sense to kind of take time off. No two ways about it. We all know. Not only Ronaldo, everyone loves the family, and of course Ronaldo तो यार more so. हमने देखा है भाई how he reacts on his dad a lot of times. So I think his mom is the biggest supporter in the stadiums. आप देखे हो काफी बार. So if that is true, fair enough, absolutely. But at the same time, उन्होंने ये भी बोला we are planning with Ronaldo for the season. That is Ten Hag. That's it. I'm looking forward to working with him. एंड व्हाट अबाउट रोनाल्डो वांट्स टू लीव. और काफी सारे रिपोर्ट्स आ रहे थे भाई इनकी मीटिंग नहीं हुई है, वो नहीं हुई है, वो नहीं हुई है. भाई बोल दिया उन्होंने. ही हैजंट टोल्ड मी दिस. आई हैव रेड, बट एज आई से क्रिस्टियानो इज नॉट फॉर सेल. ही इज इन आवर प्लान्स एंड वी वांट टू गेट सक्सेस टुगेदर. And he also adds, I spoke with Ronaldo before this issue came up. I had a conversation with him and had a real good talk. So all those theories, all those conversations, kya Ronaldo and Ten Hag kind of off the field they are like definitely एक है positive environment. लेकिन reality is that maybe he's looking out because of no European football etc. लेकिन यार बात हो गई है एंड ही इज द फ्यूचर. लेकिन वाई मैं बोल रहा हूँ थियरी है. यहाँ पर मैं क्विकली जंप करूंगा चेल्सी पर. और यस मैं काफी कमेंट्स पे आ रहा हूँ. अगेन ऑल दोस वाचिंग यार डू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट रोनाल्डो नाउ. इज इट टेन हाग इज जस्ट काइंड ऑफ सेइंग इट फॉर द मीडिया, और डू यू थिंक रोनाल्डो इज गोइंग टू स्टे? लेट मी नो इन द कमेंट्स, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन अभी भी. और क्या हो रहा है यहाँ पर, एक और मैं क्विकली दिखा दो क्लिप. पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं. यहाँ पर Thomas, do we sign Cristiano Ronaldo? Right here, folks. I'm not telling you. Did you actually notice the grin? आपने शायद देखा होगा ग्रिन. I don't know, for people who closely follow Thomas Tuchel, has Thomas Tuchel given something away there? मतलब he could have said no, I don't want to speak about other players, लेकिन I don't want to tell you. I'm not going to tell you. मतलब I don't know, or just not I'm not going to tell you. Is there something in the grin? हाँ, at the same time भाई there are reports saying निजार कंसेला ने कंफर्म किया है that Thomas Tuchel की प्रायोरिटी नहीं है नेमार एंड रोनाल्डो. Okay, that is also a fact. But at the same time, is he still thinking Ronaldo? I think he's undecided आज के दिन में. और as मैंने डाला था theory, he might just wait for 1 week of pre-season. ठीक है, he will see how यार स्टर्लिंग और हावर्ड साथ में कैसे कर रहे हैं in maybe a 3-4-1-2 formation or mount in behind, or then he'll kind of decide. मुझे लग रहा है we are still undecided. और yes, लेकिन हम undecided रह सकते हैं. Chelsea fans, come on. यहाँ पे एब्सोल्यूट चेल्सी ने एक स्टेटमेंट दे दिया भाई दैट रफीनिया का जो हुआ है, और उस पर भी डेफिनेटली आएंगे. चेल्सी आर नाउ विलिंग टू फोकस ऑन अदर अटैकिंग एरिया. भाई अभी तक क्या भाई पापड़ बेल रहे थे, क्या कर रहे थे? व्हाट वाज चेल्सी डूइंग राइट नाउ? I have no idea what is going on. But definitely we'll come to other Chelsea stories, and we'll stick to Ten Hag of course for now. And yes, Vishal, I'll take a question as well. When we move to that, looks like we'll have 200 million to spend this summer, spending 72 million on Raphinha.
that also in installments is a great deal in my opinion. Parth bol rahe as a Barca fan. Tuchel drops hints on Ronaldo deal. Have you seen the reaction of Tuchel? वही मैंने दिखाया. I think I kind of took the comment late. Ayush, big up भाई, कैसे हो? Ronaldo is going to stay whether people like it or not. United won't allow him to go to Chelsea. Bayern won't offer him high wages and he might choose Sporting just yet. Perfect deadlock. Okay, well, मानव करेक्ट बोल रहे हो आप. डेफिनेटली यूनाइटेड नहीं जाने देगी, स्पेशली यार इतने सारे अटैकिंग रीइंफोर्समेंट अवेलेबल ही नहीं आपके पास. लेकिन अगेन statement is like I spoke to him, he's going to stay. Has the statement told anything about he wants to stay? He wants to stay, he wants to do it. मतलब versus a Tuchel, I know I'm maybe reading a bit too much, maybe I'm a bit opportunistic, आप बोल सकते हो, especially opposition fans and even Chelsea fans जो नहीं चाहते रोनाल्डो को. लेकिन द फैक्ट इज भाई अभी तक आई डोंट थिंक इट्स एज क्लियर एज जे. मेरे ख्याल से नहीं हुआ है एज मच एज टेन हाग ने बोला है. टूकल का भी काइंड ऑफ रिएक्शन अगेन फॉर समवन हु फॉलोज टूकल लाइक एवरी वीडियो ऑफ हिज. मे बी आई एम रीडिंग टू मच, आई डोंट नो, आप बोलिए इन द कमेंट सेक्शन. बट अदर देन दैट क्या किया भाई, क्या किया टेन हाग ने, और ये बवाल मचाया है बिकॉज this is a shocking news for me. मतलब I have to say, even as an opposition, even as a rival fan, ठीक है. Harry Maguire is the captain. He's an established captain. He's achieved a lot of success, so I don't doubt this issue. Wow, like क्या ही तो बोलूं. Harry Maguire is captain. Like really, man. मतलब, oh man, I don't know, man. Stop it. Get some help. Really, man. I think sorry about it. Like, bhai, even Manchester United fans would agree. Harry Maguire as captain, really? यार क्या वो even command करता है his position in the 11? हाँ, you can say a lot of times you have captains kind of captaining the club or the country. अगर वो bench पर भी होते, they are the club captain or the country captain. I understand that, but that happens when you are towards the end of the career. Harry Maguire आज के दिन में pretty sure भाई अगर वो लिसांड्रो मार्टिनेज के लिए जा रहे हैं, हाँ, you can say it's maybe cover for Harry Maguire अगर Harry Maguire वापस से हकते in terms of the performances. But I'm telling you, even for Manchester United's sake, I don't think Harry Maguire should be the captain. That is a clear view I have. Ten Hag भाई आपको चाहिए भाई थोड़ा help, definitely I genuinely mean it. But yes, Mujahid Khan with a super chat भाई काफी, it means a lot. It's the gesture more than anything, Mujahid Khan. And ये shout out भाई इनको भी, और इनको और श्रेय पाटिल स्पेशली को, जिन्होंने मुझे हेल्प की इन टर्म्स ऑफ गेटिंग FIFA 22 एंड गेटिंग rid of those lines. और yes, for people out there जिन्होंने देखा होगा on Almighty Sports Plus, we used to play with all those lines and only retro FIFA. We have upgraded and thanks to Mujahid and a lot of people, Manav है, श्रेय पाटिल है, शायद है, काफी लोग, everyone in the house, yeah, definitely भाई big up है. Yes, Manav says 46 votes, only 18 likes. Like, share, subscribe, people. Come on, doesn't take a buck. Big up to Mujahid definitely for the super chat. But again, like, share, subscribe का तो definitely पैसे नहीं लगते भाई, कर लिया करो, और मैं आपके हिसाब से करूंगा भाई in terms of timing भी. लेकिन I don't know भाई, Manchester United fans talking about Harry Maguire. Harry Maguire surely would have been highest own goal scorer of previous season. His achievement, अरे भाई साहब, even Maguire doesn't have that much confidence in himself. Did United board and management? I don't know man. एक चीज होती है भाई, आप बैक करो आपके कैप्टन को, और एक चीज होती है भाई आप उसको और भी प्रेशर डालो. तो मेरे ख्याल से दिस इज नॉट गुड अगर वो सच है. एंड नाउ द वे ही सेड इट, आई डोंट थिंक वो चेंज भी कर सकता है एनी टाइम सून. हाँ, मे बी कर ले, ही इज बेसिकली द मैनेजर ऑफ द टीम, ही हैज द अथॉरिटी, लेकिन आई डोंट थिंक इट विल बी राइट ऑन हिज पार्ट टू काइंड ऑफ डू दैट एज वेल. तो आप बोलिए भाई, हैरी मैग्वायर एज कैप्टन, वेयर विल यूनाइटेड काइंड ऑफ एंड अप? Just thinking that in mind. Maguire as a captain looks like he's going to be an integral part of ETH building from the back style. Also, I strongly feel this is a statement made of stabilizing thing, not changing much. Okay. Like, I don't know, building from the back, you can kind of do that. Like, in Harry Maguire in the 3 the back is very good. Agar 3 the back ja rahe, to bhai, why have they signed, as in Eriksen? I don't see that happening. Eriksen cannot play agar wo 3 the back खेलेंगे in the system or the personal जो है Manchester United के पास. I think Manchester United need proper 3 midfielders. So kind of strange. और आप बोलोगे, in case Ronaldo leaves, 3-5-2 अभी भी possible है, very much so. Rashford and maybe they get a Dybala. That might happen. I don't know. Just putting it out there. And yes, we'll come to the other clubs as well. Absolutely. I think Varane McTominay भी injured है. हाँ, लेकिन भाई it's only short term ना Adin. Harry Maguire, I don't think he said for the Liverpool game जो होने वाला pre-season का कल. I think he said generally, he's Manchester United captain. Period. Lou Manu, Man United fan in the house, let me know.
हेलो अंकित, इट्स ऑल ओवर एस ETH इज बिट्रेड एस फैंस। और भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। ऐसा ही रहा तो मैकटोमिने बी आर फ्यूचर कैप्टन। अरे फुटबॉल विद कमेंट काफी अच्छा लगता है भाई, आप आते हो तो हमेशा। एंड अगेन बिग अप भाई, नॉट ओनली बीइंग अ मेंबर ऑफ ऑलमाइटी ब्लूज एफसी बट ही हैज अ चैनल एज वेल। सो यार सब लोग, आई ऑलवेज से every kind of support means a lot, and I know I've been through it. Football comment, I'm still going through it. Everyone, yeah, please subscribe to Football with Comment, and not just that, do to Almighty Blues FC and Almighty Sports Plus. लेकिन यार सब चैनल्स में ना बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिए, एंड डेफिनेटली सपोर्ट देम एज मच एज पॉसिबल, और फीडबैक भी दीजिए अगर आपको पसंद नहीं है, राइट? डोंट इग्नोर, दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट. CFC Blues, hello, always good, and big up इनको भी यार for the FIFA streams especially and much more. काफी सारे अपडेट देते हैं between the FIFA stream, जिससे हमें ट्रांसफर स्टोरीज भी कवर करनी मिलती है. समर जोशी as well, and we have सुमन साहा. भाई आप चेल्सी लेवेंडोस्की के पीछे, हाँ वो है, आएंगे. हाँ भाई डेफिनेटली करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे, डेफिनेटली करेंगे. FIFA, Raphinha, Dembele both to Barca have to be one of the best transfers. चलो यार हो जाए बात बार्सा और चेल्सी की, हो जाए थोड़ा, हो जाए भिड़ंत यार. अमोर, आई लव यू all the subscribers out there who are Barca fans. I am a fan of a lot of Barca players in the past as well. लेकिन भाई साहब यहाँ पर थोड़ा सा सच्चाई हो जाए भाई. Anyone, if you can get Chelsea fans, brilliant man. We need to have a discussion. और क्या डिस्कशन करनी है हमें? ये करनी है भाई साहब, यस, ब्रिलियंट न्यूज फॉर बार्सिलोना. 72 मिलियन यूरोज फैब्रिशियो रोमानो को सब लोग ने देखा होगा वीडियो, and the fact that 68 million base plus I know थोड़ा इंटरेस्ट I think एक्स्ट्रा देकर 72 मिलियन यूरोज ओवर कोर्स ऑफ टाइम वो पे कर रहे हैं ऑफ कोर्स टू लीड्स यूनाइटेड. ठीक है, तो लीड्स यूनाइटेड वो लेने वाली है 72 मिलियन यूरोज. इन माय मैथमेटिक्स द वे इट गोज इज अबाउट 60 plus pounds for sure, 60 plus million pounds. Or all the content creators out there, or rather not content creators, so social media जो experts है ना, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट भाई, काफी लोग ने बोला है 72 मिलियन पाउंड. भाई 72 मिलियन पाउंड नहीं है, 72 मिलियन यूरोज है. there's a huge difference between the two. First of all, let's get the maths right. ठीक है, there's a huge difference. तो 72 मिलियन यूरोज है, and yes, a lot of people are saying भाई बार्सा के पास सडन से इतने पैसे कैसे आए, 72 मिलियन पाउंड, तो एक तो 70 मिलियन यूरोज है. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग यार. लेकिन दे हैव अ पॉइंट, क्योंकि डेम्बेले, यस, रिड्यूस कॉन्ट्रैक्ट इज कमिंग, तो डेम्बेले आने वाला है. रफीनिया इज कमिंग, ऑब्वियसली उसका इंटरेस्ट काफी स्ट्रांग था लास्ट, आई थिंक ड्यूरिंग फीफा वी वर डिस्कसिंग एज वेल कि भाई होने वाला है. फैब्रिशियो रोमानो हैज आल्सो सेड दैट दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्लोज, एंड रफीनिया खुद ट्राई कर रहे हैं, ही इज होपिंग फॉर द बेस्ट विद इन दैट 48 आवर्स पीरियड जो था ना, डेको ने दिया था. तो ये तो होने वाला है. लेकिन व्हाट अबाउट रफीनिया? डज ही स्टार्ट? डज ही इवन स्टार्ट? टेल मी भाई, अगर बार्सा फैंस बोलेंगे कि आज के दिन में रफीनिया इज अ बेटर प्लेयर देन डेम्बेले, फेयर इनफ, लेकिन आज के दिन में वुड यू सैक्रिफाइस जो डेम्बेले की फॉर्म थी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन फॉर अ रफीनिया? वेयर वुड रफीनिया स्टार्ट? आई हैव नॉट सीन रफीनिया प्ले ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. हाँ, डेम्बेले कैन प्ले लेफ्ट साइड में, लेकिन देन व्हाट अबाउट एंसु फाटी जो फाइनली हुए फिट? व्हाट अबाउट पेड्री? व्हाट अबाउट all those attackers they have? What about Ferran Torres? अगर वो लोग लेवेंडोस्की को भी ले रहे तो यार Ferran Torres स्ट्राइकर तो नहीं खेलेंगे, ओबामेयांग भी है वहां पर. तो आई एम रियली सरप्राइज. यस, ऑल द रेस्पेक्ट टू बार्सिलोना, वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स एवर, नो टू वेज अबाउट इट, ऑल द रेस्पेक्ट, आई हैव टू गेट इन दैट, राइट? वो फैक्ट है कि यार वी आर अ स्टेपिंग स्टोन टू बार्सिलोना, रियल मैड्रिड एंड बायर्न म्यूनिख लॉट ऑफ टाइम. जो हुआ है वो चलते रहेगा फॉर अ फ्यू इयर्स until we kind of get there. ठीक है, but at the end of the day there has to be some kind of player ambition. Like for me, going to Barca, chalo, dream club, I understand, but not starting. I have my doubts on Raphinha's kind of mentality here. थोड़ा सा है मेरे. ठीक है, हाँ, बार्सा फैंस बहुत खुश होंगे. Obviously अगर वो चेल्सी को बोलता भाई आना चाहूंगा despite ZH being there, I would have been happy because he's a good player. I understand that, but from Raphinha's perspective, I don't understand at all. Having said that, I have to put in this as a Chelsea fan and someone who's been following football for what, over 2 decades. By Barcelona, trust me, they are getting obviously Raphinha, but is it even morally right? और हाँ, बहुत सारे sensitive terms हम यूज करने वाला हूँ. No offense to any Barca fan, no offense to Barcelona as a club. लेकिन I am questioning the intent. Intent क्या है? Frenkie de Jong क्यों है thumbnail में? भाई Frenkie de Jong, correct me, yaar, Barca fans, all the Barca and ultras especially, aap correct me if I'm wrong. Frenkie de Jong, I think Barca is owing what, 17 million or something? Correct me if I'm wrong.
और दे से दैट राइट नाउ वो 3 मिलियन देने वाले हैं एंड मे बी नेक्स्ट इन इंस्टॉलमेंट्स, और अगर वो जाता है मैन यूनाइटेड तो वो डील में हो जाएगा, मैन यूनाइटेड इज इवेंचुअली पेइंग फॉर हिम, ऐसा कुछ हो रहा है डील अगर वो जाता है, ठीक है भाई। आपके पास फ्रेंकी डियोंग को पैसे देने के लिए है नहीं पैसे, ठीक है, आपके पास है नहीं। 17 मिलियन इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इट्स 17 मिलियन रुपीज, सॉरी डॉलर्स और यूरोज और पाउंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। आप बेसिकली वो 17 मिलियन एक झटके में बढ़ा देते हो फॉर रफीनिया। इज इट इवन राइट? इज इट इवन राइट एज एन ऑर्गेनाइजेशन? आई एम जस्ट क्वेश्चनिंग। अगर मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है ना, फुटबॉल इज वेरी डिफरेंट एंड इज मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स, मल्टी ईयर डील्स होते हैं, मल्टी ईयर काइंड ऑफ इंस्टॉलमेंट्स होता है। आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, हैविंग सीन सो मेनी ट्रांसफर्स ओवर व्हाट ओवर सो मेनी ईयर्स। लेकिन भाई, आई हैव माय क्वेश्चन मार्क्स ओवर द इंटेंट। देयर इज समथिंग मोर देन व्हाट आई नो, there is something more. हाँ, economic levers है, but then in that case, why aren't they giving Mr. Frenkie de Jong all the money that they are owning? Let me know यार, anyone, any Barca fans especially, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ फैक्ट, प्लीज करेक्ट मी। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू काइंड ऑफ रीड इट एंड करेक्ट माई सेल्फ, ठीक है। लेकिन मेरे लिए अगर इफ आई एम फ्रेंकी डी जोंग, आई मस्ट से, और इसीलिए भाई फ्रेंकी डी जोंग हैज नॉट कमिटेड टू एनी ऑफ द क्लब्स अभी तक इन माय ओपिनियन, क्योंकि ही इज सीइंग दैट समथिंग इज totally not right happening. हाँ, अगर बारसा चेंजेस स्टांस आफ्टर 2 days कि नहीं, इकोनॉमिक लीवर्स हैव बीन वेव्ड ऑफ, नाउ टाइम आ गया है, ये एक नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आने वाला है तो आपका अभी क्लियर कर देंगे यहाँ पर, देन आई अंडरस्टैंड। बट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड अगेन, लेट मी टेक सम कमेंट्स। ये सब लपोर्टा का मास्टरमाइंड है, फ्रेंकी का मनी और रफीनिया डील, लेकिन मास्टरमाइंड आई अंडरस्टैंड भाई, लेकिन क्या हुआ है, मतलब फॉर मी इट इज क्वेश्चनेबल, ऑलमोस्ट इट इज क्वेश्चनेबल। ये तो ऑलमोस्ट इन द सेंस ऑफ फाइनेंशियल फेयर प्ले भी क्वेश्चनेबल होगी। इफ इन केस से कल को फ्रेंकी डियोंग इज नॉट पेड, जस्ट हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, नो रियलिस्टिकली नहीं, हाइपोथेटिकली वो पे नहीं किया जाता इन द नेक्स्ट व्हाट 12-18 महीनों या 24 महीने, जो भी आप मानो यार, और मैं बोल रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ द टोटल फिगर, एंड देन रफीनिया के लिए वो पे करते हैं टू लीड्स यूनाइटेड, कैनॉट फ्रेंकी डियोंग काइंड ऑफ एक केस डाल सकते हैं। आई एम जस्ट पुटिंग इट आउट देयर, और फीफा विल बी हैव टू क्वेश्चनिंग बार्सिलोना। या फॉर मी इट इज क्वेश्चनेबल, बिग टाइम क्वेश्चनेबल। बट अगेन नथिंग अगेंस्ट बार्सा फैंस एंड बार्सिलोना, मैं वापस से बोल रहा हूँ, डोंट गेट इट रॉन्ग, बिकॉज फॉर पीपल टू जज, आपको सब देखने पड़ेंगे मेरे सब वीडियोस और सब स्ट्रीम जो मैं करते आ रहा हूँ लास्ट 1.5 सालों से, तो सब लोग देखिए, everyone knows it. I kind of speak my mind and speak very fair, but I am just looking by the facts. But हार्दिक का लेते कमेंट, नहीं भैया देखो, I'll tell you, 19 मिलियन देने हैं हमने वेजेस में, exactly. If we give him to wage bill का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, and then same problem will not able to register players. Okay, तो हार्दिक बोले basically we cannot pay him at once. ठीक है, that is what he's saying. But the fact that why aren't you able to pay him? Why haven't you paid him in the recent past? मतलब द फैक्ट दैट आपने पे नहीं किया है ना, तो आपको बेसिकली पे करना ही इवेंचुअली। आप लीड्स को तो कर रहे हो ना प्रॉमिस कि आप दे रहे हो, और मेरे ख्याल से लीड्स का जो पहला ऑफर था बारसा का, आई थिंक इट वाज इन पोर्शंस, आई थिंक दे हैव इंप्रूव्ड द फ्रीक्वेंसी आल्सो। तो हाउ हैव दे बीन एबल टू इंप्रूव द फ्रीक्वेंसी एज वेल एंड द प्राइस? आप सोच के देखिए ये बात हार्दिक, मतलब आई एम जस्ट अगेन एक बार ट्राई एंड थिंक लाइक अ न्यूट्रल। ट्रस्ट मी, it is questionable. Trust me, it is questionable. But again, I have to buy your point as well, Hardik. Also, Raphinha money is up top and it will not come in FFP thing. Isliye we can pay the transfer sum, bro. Okay, so wages basically are more realistic when it comes to FFP, and transfer money doesn't matter. Why? Then FIFA has to be questioned, Hardik. तब तो FIFA की problem है. FIFA and UEFA have to be questioned big time. तो यार absolutely farce है ये FIFA का, कि भाई अगर वेजेस काउंट हो रहे हैं और आपका ट्रांसफर मनी काउंट नहीं हो रहा, भाई पैसे तो पैसे है ना। आई काइंड ऑफ डिसएग्री विद फीफा's रूल देन। दिस इज हाउ पीपल लाइक लपोर्टा एंड पेरेज फंक्शन, एंड फ्रेंकी स्टेज बारसा विल हैव टू पे। हाँ, दे हैव टू पे। ये प्रतीक का मैं 100% अग्री करता हूँ। अगर फ्रेंकी मानता है ना टू स्टे एट बारसा, टू बेसिकली बी पेड इन इंस्टॉलमेंट्स ओवर 5 years, जो काफी लोग बोल रहे थे, आई थिंक इट्स काइंड ऑफ saying that Frenkie has and his team, not him himself, वो उसका team basically are not understanding the thing that he is being used, और वो fact है। I am using this word, yes, Frenkie का basically जो है, he is not being strict about being paid, वो चीज it has been used to Barcelona's advantage. So I think he needs to realize that, or that's a reality, or FIFA is at fault. One of the two definitely is at fault.
अदरवाइज मैथ्स कैन नॉट, मतलब अगेन मैं काफी बार जोक करता हूँ, मैथ्स इज नॉट गुड भाई। मेरी भी मैथ्स में 95 थे 10th में, कुछ तो जानता हूँ, थोड़ा तो भाई नहीं हो सकता, लेकिन एनीवे लेट्स गो विद इट। अगेन रेस्पेक्ट टू बार्सा एंड बार्सा फैंस, नथिंग अगेंस्ट देम, लेकिन आई एम जस्ट अगेन, मैं हो सकता है आप बोलोगे सॉल्टी हो, नहीं, आप लोग मेरा ट्वीट चेक कर सकते हो, मैं यहाँ पे ट्वीट भी किया था, मैं शेयर ही कर देता हूँ ना आप लोग, बिफोर पीपल जज मी, लेट मी एक्चुअली शेयर इट बिकॉज आई नो दैट पीपल माइट वॉच इट लेटर ऑन, क्योंकि अभी तो यार काफी लोग है नहीं, बट जो भी है भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब डेफिनेटली कर दीजिए, वो तो यार फॉर नॉट ओनली मी, फॉर एवरी चैनल मैं बोलते आ रहा हूँ, फॉर अ पर्टिकुलर रीजन भाई। लेकिन यहाँ पर मैंने ट्वीट किया था, और बहुत ही मतलब कायदे वाला ट्वीट था मेरे ख्याल से, मतलब आप लोग कमेंट करिए, मैं आज ट्वीट मेरा शेयर करता हूँ, मैंने क्या ट्वीट किया था। मैंने क्लियरली ट्वीट किया था कि भाई देख लो, इट वाज इनएविटेबल। क्या इनएविटेबल था? रफीनिया गोइंग टू बार्सिलोना, ठीक है, wasn't it? It was definitely inevitable. लेकिन congrats to him and Barca, मैंने क्लियरली बोला है, no point in being salty. Better to get what you want and the other should want as well, to be honest. But who do we get now? मतलब मैं चेल्सी के लिए यहाँ पे टोटली बोल रहा हूँ कि भाई we are in a soup right now in terms of one more extra attacker. ठीक है, कोई नहीं, it's cause his salary is too high, he doesn't want to reduce it. On top of that, Barca are in love with Silva and they want to sell De Jong and get Silva. भाई अभी भी मेरे डाउट्स है यार, आई नो एनीथिंग कैन हैपन इन ट्रांसफर मार्केट, बट आई हैव माय डाउट्स फॉर बर्नार्डो सिल्वा कमिंग टू बार्सिलोना, आई रियली हैव माय डाउट्स सच में सामियन, बट अगेन वी नेवर नो, अरे ट्रांसफर मनी एंड सैलरी आर फाइनेंशियल फेयर प्ले इज वेरी डिफरेंट, it is different, but question is why? It is a problem, it is not realistic. मतलब FIFA क्या किए, FIFA have done a kind of setup to kind of suit the clubs who are basically in that stage right now, to be very honest. मतलब ऐसा ही तो भाई, मतलब why did Chelsea get banned from making transfers? I just have to question that. रिचर्ड आर्नल्ड इज इन बार्सिलोना, सक्षम बोल रहे हैं, अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो, बार्सा फैन बुरा नहीं मानेगी, जस्ट गलत वे में मत बताना। एग्जैक्टली मैन, मतलब रोनाल्डो, ग्लैड दैट आप ऐसे सोचते हो, अनफॉर्चुनेटली सब लोग ऐसा नहीं सोचते, इसलिए मैं मतलब डेफिनेटली यार समझाना पड़ता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द काफी सारे यंगिश फैंस भी होते हैं ना, तो जस्ट लेटिंग देम नो, क्योंकि नए नए फैंस भी होते हैं इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल, राइट? ओके, यहाँ पर चलो थोड़ा सा मूव ऑन कर लेते हैं टू ऑब्वियसली यूवेंटस एंड बायर्न म्यूनिख, और विल कम बैक टू बार्सिलोना चेल्सी, एब्सोल्युटली हम विल कम बैक। यार आप लोग बताइए मीनवाइल, which attacker should Chelsea go for now that congratulations again to Barcelona, Raphinha definitely is going to Barcelona, no two ways about it, and of course Dembele भी वहीं जा रहे at a reduced wage, but I think 2 ही साल का डील है Dembele का, तो even there I am a doubt भाई, आपका क्या है मतलब, यार यहाँ पर चेल्सी तैयार थी आपके लिए, but I don't know, maybe loves the place, I don't know, कुछ तो है। Having said that, Bayern director Hasan Salihamidzic says on Matthias de Ligt deal when asked to negotiation with Juventus. We will see. Malab again, CFC Blues, is it something like a Tuchel answer when he was asked about Ronaldo today? And yes, मैंने दिखाया था वो video in the beginning of the stream, so सब लोग देखिए क्या वो भी, because Tuchel in kind of weird sense has said कि यार I won't tell you, but only when it happens, something like that. वो मुझे लगा, I don't know, I might be wrong. Yeah, it's true what you said, but I think last year Real Madrid also said, yeah, exactly. जगी Real Madrid भी है उसमें, और मैं say the bigger clubs than Chelsea, I obviously, well, there's no secret there, I definitely mean a Real Madrid, a Barcelona, a Bayern Munich, and the lots, right? Let's be honest. यहाँ पर मैं I'm not against any fan base or any club, but the reality is that I have felt even for Man City in modern times, I have felt that there are different rules for Chelsea and different rules for other clubs. I really feel that. I genuinely feel that. तो मैं यार एक्सप्रेस करना तो बनता ही था एज अ चेल्सी फैन। आई एम नॉट सॉल्टी, आई हैव टू टेल यू आई एम नॉट सॉल्टी, क्योंकि मैंने काफी बार बोला भी है कि भाई रफीनिया और जूल्स कुंडे जैसे पीपल नहीं आए तो बिग डील मैन, दे आर नॉट द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हाँ, इफ से वी लूज अ नेमार और रोनाल्डो टू समवन एल्स, और हम लूज करते मैटिस डे लिक्ट, जो मैं काफी नाखुश हूँ, देन आई माइट बी लिटिल बिट सॉल्टी। Manchester United sporting director is in Barcelona. Yeah. Let's see what's happening there. And yes, membership is open, guys. Support the channel and check out these cool emojis. Absolutely, bhai. Mara बढ़िया है, बढ़िया emojis लगते हैं. And yes, to all the members, you can use, put a colon, put the emoji and put the colon again. You'll get the emoji. Brilliant emojis for members there. हम और भी लाने वाले हैं, obviously. And yes, for members, भाई, member streams भी करना है in the future. So, लेकिन उसके लिए we'll need to have more members. So let's have more members first. La Liga is to be questioned, पता नहीं क्या। हाँ, La Liga also, हार्दिक very good point भाई, and again coming from a Barca fan, तो आप देख सकते हो La Liga का नाटक है। ओके प्रतीक, fair enough.
and Laporta Shitauzi, the player who is giving everything to club, you ain't paying him money. Exactly man. और वो ऐसा प्लेयर है जो अभी भी यार क्लियरली बोल रहा है I want to play for Barca. हार्दिक, imagine this is that player, Frenkie. ठीक है, I am like so surprised by Frenkie and his team, by so surprised. Even Dembele to some extent. Yeah, exactly. After being one very recently, okay, still splash cash surprise. Exactly, basic maths माना, very good यार, thank you शेयर करने के लिए. मेरा वही पॉइंट था. -350 होते हैं भाई मेरे मैथ्स के हिसाब से. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग पीपल वाचिंग. -350 होता है. मतलब कैसे आप कर सकते हो? हाँ, आई अंडरस्टैंड यू आर टेकिंग अ लोन, आपने गिरवी रखा है बेसिकली, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, और बेसिकली आप इन bits and portions आप spend करोगे for the need that you have. लेकिन how can you spend on Dembele's wages so much? How can you basically, yes, reduce wages भी, and at the end of the day it's more than many other clubs की wages. How can you get a Raphinha at 72 million euros? How can you? And expect to keep Frenkie de Jong and Lewandowski. इसलिए शायद Lewandowski के स्टोरीज आ रहे हैं. बट या उस पर चेल्सी पर थोड़ा चल जाते हैं, तो चेल्सी फैन मारेंगे पकड़ के. ऑलरेडी क्लूज एफसी भी है एंड ऑफ द डे. और भाई सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, भूलना मत. डेफिनेटली द मोर पीपल वी हैव. एंड यस, मैंने शुरुआत में ये भी पूछा था भाई, एवरीवन इन द चैट यार प्लीज, इट मीन अ लॉट अगर सब लोग एक कमेंट डाल दो कि व्हाट टाइम do you prefer me to put out a short video and what time do you prefer me to come live. I will come live at that time and put a short video at that time. हाँ, we have 2 channels, तो वहां पर थोड़ा दुगना होता है effort, तो hopefully that effort is also reciprocated, because yes, we do some short videos, or just not just me, there are people sometimes helping me out, लेकिन not always. तो again it will mean a lot अगर आप लोग वो बताओ तो बहुत बढ़िया रहेगा. And yes, we have started a lot of upgradation already, so if you can become members, nothing like it. Manchester United leaders had a meeting with Barca's, yeah, fair enough. CFC Blues, that's something that मैं expect भी करा था इस हफ्ते, is very important for Manchester United as club. अगर आपको ये स्ट्रीम बारसा के स्ट्रीमर लाइक ईशान भाई, मुकेश और सादिक भाई के साथ करना था, तब आपको सब आंसर मिलता. वेल, हम बात करेंगे भाई रोनाल्डो, डेफिनेटली हम बात करेंगे. लाइक आपको पता है, वी ऑलवेज डिस्कस अ लॉट विद अदर बारसा फैंस हो गए, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस हो गए, आर्सेनल फैंस हो गए, लॉट ऑफ फैंस हम बात करते रहते हैं. दैट इज समथिंग दैट विल गो ऑन. लेकिन अगेन, क्योंकि यार आई हैव टू कवर ट्रांसफर स्टोरीज ऑफ ऑल द क्लब्स, इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट ऑल द फैंस टुगेदर, तो मैं ये किया हूं. और ऑफ कोर्स यार कभी-कभी क्या होता है ना, स्टोरीज आते हैं और हम बोलते हैं यार चलो लाइव चलते हैं. नॉट ओनली दैट, एज अ मतलब आई एम प्रीटी श्योर काफी लोग को इंटरेस्ट भी है. मेरे क्या व्यूज है, मेरे व्यूज ये है भाई, मेरे व्यूज ये है. एंड ऑफ कोर्स फॉलोइंग फुटबॉल माई सेल्फ फॉर ऑलमोस्ट व्हाट 28 years in terms of international football and 22 years in terms of club football. यार थोड़ा तो मुझे भी यार एक्सप्रेस करने का मन करता है. तो आई एम लाइक विद माय फ्रेंड्स, एंड हु आर माय फ्रेंड्स? ऑल यू व्यूअर्स आर माय फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली. क्योंकि यार एट द एंड ऑफ द डे आई रेस्पेक्ट योर ओपिनियन एज वेल. तो इसलिए मैं देखना चाह रहा हूँ यार, एज जस्ट एज फैंस आई एम एक्सप्रेसिंग, एंड जस्ट एज फैंस आई एम हियरिंग फ्रॉम यू ऑल, राइट? एंड देन ऑब्वियसली द कंटेंट क्रिएटर्स, आई विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम दैट. और मैं भी यार काफी tier 1 tier 2 जर्नलिस्ट को फॉलो करता हूँ ऑल द क्लब. सो I try and get a lot of information and going with that. But definitely we'll continue that, Ronaldo. Okay, and yeah, look at that, Manav. Yeah, I don't even need to say much. Manav has kind of hit the nail on the head. Absolutely. Surprised that some opposition fans are questioning FFP in the case of Barca. Divyanshu, no, I'm not questioning just Barca. I'm questioning the system. System क्यों मैं कर रहा हूँ यार? We were in a transfer ban. I know Barca भी थी शायद, if I'm not wrong, लेकिन we were in a transfer ban, and at that time हमारा क्लब कहाँ से कहाँ चल गया मुझे मालूम है भाई. मुझे मालूम है. And if you're not in a transfer ban, who knows that Hazard may have kind of stayed. I'm just kind of putting it out there, and that was already in the news, by the way. So I'm like यार कुछ क्लब्स के लिए अलग है, कुछ क्लब्स के लिए अलग है. That is a problem with the system. So I don't think it's about Barcelona here alone. It's about basically the system kind of having a thing for maybe some clubs. It's not just one club I'm talking about. Not like okay, fair enough, Ronaldo. Plus Raphinha's money is split into 3 years and not straight cash. हाँ, लेकिन पहले भाई उससे भी लंबा था सिड, उससे भी लंबा था. इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि is Frenkie being paid all the money within maybe 2 years? That's my question. Let's see. Time will tell. Now Chelsea should go for Gnabry. Okay, चलो एक comment आ गया है. Which are the forward that Chelsea should go for? Or let's talk about that quickly. And yes, Lewandowski. भाई the fact is Depay was offered. Again, as a Chelsea fan, आप बोलोगे मैं थोड़ा salty हूँ.
बट द फैक्ट यार बार्सा और चेल्सी और यूनाइटेड और चेल्सी डायरेक्टली compete कर रही इन द ट्रांसफर विंडो दिस टाइम, आई थिंक चेल्सी शुड बी a little bit smarter. मेरा ये ओपिनियन है. इट इज नॉट अबाउट बीइंग सॉल्टी, इट्स अबाउट बीइंग स्मार्ट. That at the end of the day, these are clubs who might face you in the Champions League maybe this year or next year. That might be in case of Barcelona this year, in case of Manchester United next year. तो भाई आप डायरेक्ट करो ही मत ना, करो ही मत बिजनेस. हाँ, you heard me right. You heard me right. Yes, definitely. Just like basically, आप बोलोगे like a Lewandowski. Bayern Munich should respect Lewandowski. Lewandowski is a legend. Anyone agrees that Lewandowski is not a Bayern Munich legend? He's definitely a Bayern Munich legend. Yes, legend काफी इजीली थ्रो किया गया था, लेकिन Lewandowski is a Bayern Munich legend. Period. तो आप बोलोगे फॉर Bayern Munich, they should hear what Lewandowski का इच्छा है, and they should do whatever he wants. लेकिन वो होगा नहीं. लेकिन चेल्सी का करने वाली है ना, मैं बोलूं चेल्सी का करने वाली है. Azpilicueta भाई, he has served us, he has won us every possible trophy that there is. आपको बारसा जाना है, जाओ भाई. हम एक्चुअली ड्रॉप करके आते. That is what the difference is. Yes, Arsenal wasn't my direct rival at the time that Petr Cech was sold to Arsenal. Yes, I agree. मतलब वो लेवल की राइवलरी नहीं थी उस साल में. लेकिन फिर भी भाई पेटर चेक को छोड़कर आए भाई, लिटरली छोड़कर आए लिटरली. और कब छोड़कर आए? When he still had one good year in him. और जब टीबो कोटवा ने किया हमें धोखा. ठीक है, तो आप सोचिए, that is the kind of difference. So I think Chelsea needs to be smarter here, and I believe that yes, I'm saying it right here कि भाई Depay और Sergino Dest, by the way Sergino Dest I don't think is really advanced. जो मैंने कल रात में भी बोला था in terms of the FIFA stream हमने जो किया था, Sergino Dest हाँ उन्होंने ऑफर किया था as per the report, as per Simon Jones, लेकिन I don't think it is as advanced as what people are making out to be. ये जर्नलिज्म हो सकता है lazy because of him being American, Todd Boehly being American, और of course Pulisic being American. तो Sergino Dest अभी पक्का नहीं है. लेकिन Depay, should he take Depay? हाँ ले लेंगे अगर सस्ते में आ रहा है, डेफिनेटली भाई. आई एम अ डच फैन, आई वुड लव इट. बट अगर वो लोग चाह रहे हैं Azpilicueta और Alonso इन रिटर्न, अभी मैं मेरा थोड़ा स्टांस चेंज कर रहा हूँ. आई डोंट थिंक चेल्सी शुड बी गिविंग देम Azpilicueta एंड Alonso, टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. हाँ, क्रिस्टियनसन ऑलरेडी दे दिया भाई. हाँ, एज मच एज मैं बोलूंगा भाई क्रिस्टियनसन ने धोखा दिया, हमने पाल पोस्ट कर बड़ा किया, एंड द वे ही लेफ्ट, द वे ही काइंड ऑफ डिड नॉट रियली गिव अस अ चांस, गिव अस टाइम, वो सब मैं बोल दिया हूँ. एंड बारसा के लिए वो नहीं फिट होगा, फेयर इनफ. लेकिन क्रिस्टियनसन, लेट मी गेट इट राइट एज वेल. In a 3 the back system, in the center of center backs, I think Christensen is one of the best youngsters out there. और मैं झूठ नहीं बोल रहा. He's one of the best in a 3 the back system in the center of center half position. हाँ, अगर बारसा वो खेलेगी, बिग क्वेश्चन मार्क है. हाँ, लेकिन हमने ऑलरेडी दे दिया है, तो ऑलरेडी दैट्स इनफ इन माय ओपिनियन. हाँ, पीपल माइट थिंक दैट आई एम गोइंग अगेंस्ट बारसा नाउ, और यहाँ पर मैं दुश्मनी बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं. Again, I love a lot of players in Barca. I've gone on record saying that, for me, Gavi and Pedri will be basically what Xavi and Iniesta was. That is what the level I'm looking at Barca. But again, right now, is it necessary for Chelsea to give Azpilicueta to Barcelona? Let me know in the comments. आप लोगों को क्या लगता है? The fact कि यार direct competition है. यार आप Barca का जो hole है ना, वो fill कर रहे हो by creating a hole in your system. Especially when you are not getting a Frenkie on the cheap, you are not getting basically a Dembele. हाँ, Dembele उनका problem नहीं है, it's more of Dembele's problem कि यार he has reduced his wages and gone back. Fair enough. But even in terms of Raphinha and all that, so I think it's a direct competition. So it's not about being salty, it's about being smart. That's what मैं तो बोलूँगा. तो Chelsea का ये मेरा opinion है. Again, don't get me wrong, people. It's fair to ask questions to problems. Yeah. Is it true Bayern did not want installment fee for Lewandowski because Bayern think Barca will not exist in 1 to 2 years? यार वो थोड़ा सा I think it's been played a little bit too much. I don't think that is the reality. Let's be honest that Oliver Kahn and Salihamidzic are also respectively legends and cult players. Salihamidzic was a beautiful winger. He was a cult player in my opinion. लेकिन definitely Oliver Kahn यार proper legend है. रियली वो लोग ऐसे मीन करेंगे, मतलब कम ऑन, इट माइट हैव बीन जस्ट अ जोक एट बेस्ट, अगर वो लोग बोले भी है तो. आई एम नॉट श्योर अगर उन्होंने कोड भी किया है, दैट्स द फर्स्ट थिंग रॉकी. लेकिन हैविंग सेड दैट, यस इट इज ट्रू दैट अभी बायर्न आर बेसिकली थिंकिंग ट्वाइस बिकॉज यार इट्स अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ मनी एंड ऑल दैट. एंड अगेन रिमेंबर, उनको चाहिए बायर्न को थोड़े पैसे. क्यों चाहिए ऑल ऑफ अ सडन? हाँ, बायर्न के पास पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए, बीइंग चैंपियंस ऑफ बुंडेसलीगा फॉर व्हाट almost a decade, right? लेकिन
they are going to spend close to what, 80 million pounds. Yes, close to 80 million, 70 million pounds already शायद कर लिया उन्होंने. This is on Delict. So Delict में इतने करने वाले. Yes, they have saved about 10 million euros on each, Gravenberg, Mazraoui, and Mane. But in the end, you have to say that they need the money right now. Or who knows, क्या हो सकता है. हाँ, by the way, Salihamidzic, who was actually speaking to, if I'm not wrong, Juventus folks आज, तो हो सकता है Juventus want the entire money in a go. They don't want it in installments. और इसीलिए these stories have started. And story क्या है? That yes, Chelsea are still interested in Robert Lewandowski. But is Lewandowski interested in Chelsea? I think वो bigger question है. So anyway, let me know in the comments, भाई attacker, who's that person who fit Chelsea, who want to come to Chelsea, and why do you think these attackers are not coming to Chelsea? Is there a reason in particular? For Chelsea, any striker except Ronaldo, Danish बोल रहे. It's crazy how Raphinha desperately wants to join Barca and even wants to stay one more season in Leeds if Barca fail to sign. नहीं, दूसरा point correct नहीं है Ronaldo. I don't think he said that. He didn't say no to Chelsea. He said that basically I want Barca. मतलब no to Chelsea वाला तो कभी नहीं था. Courtois, Snake, I really want to rant. You should go for Delict blindly. But क्या हम Alonso sell करने में लगे हैं? Delict को market में लाए हम, but जाएगा Bayern. क्या कर रहे हो? बोली वहाँ. अरे, you know what, Sagnik? I understand your frustration, bhai. First of all, bhai, I know, and yes, I am expecting a Raheem Sterling announcement today. भाई हो जाता तो बोल देना भाई सब लोग. Raheem Sterling का official announcement आज मैं expect कर रहा हूँ, because the good news is that yes, part of the medicals are done as per Fabrizio Romano, तो वो तो होने वाला है, looks like. ठीक है, आज या कल में हो जाएगा announce. Having said that, I think the fact is, यार देखो, Todd Boehly came in at a point. I think it's a problem with Chelsea as well. Chelsea did not clearly decide, or we are not able to kind of prove things that okay, fine, we are not at fault, or we kind of deserve a new owner. We have finally got it over the line. हाँ, क्योंकि काफी सारे और पार्टीज थे. क्लियर लेक कैपिटल हो गए. देयर वाज बेसिकली आई थिंक एन इन्वेस्टमेंट फर्म इन द यूएस जो देख रही थी इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप जो लेने वाला है, तो वो डीले हो गया था. आपको सबको याद है तो डीले इतना हो गया कि इट वेंट 2 weeks इनटू द ट्रांसफर विंडो. सो यार जो बोले डॉट बोली बोले दैट वी आर हियर फ्रॉम मी व्हेन ही वेंट एंड मेट लापोर्टा, तो वो ही एक्चुअली वांटेड टू डू मे बी व्हेन ही जॉइंड चेल्सी एज वेल. क्योंकि एक होता है ना, ही इज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, ही वांट्स टू काइंड ऑफ नेटवर्क और जानना चाहते हैं कि व्हाट आर द ऑप्शंस, व्हाट आर द प्लेयर्स अवेलेबल. और एक होता है फेस टू फेस, यू काइंड ऑफ गेट अ बेटर काइंड ऑफ मूड, बिकॉज दीज थिंग्स हाँ हम फीफा में करते हैं, कर लो, लेकिन भाई एट द एंड ऑफ द नेगोशिएशन में फेस टू फेस इज ऑलवेज बेटर, एनी नेगोशिएशन. तो दैट्स व्हाई बेसिकली ही वांटेड टू डू दैट. और इतना लेट हो गया ना, तब कुछ नहीं कर पाते. और टॉड बॉली ने अपना काम किया है, तो आई डोंट थिंक साग्निक एंड एनी चेल्सी फैन आउट देयर हु इज ब्लेमिंग बॉली needs to do that. मतलब मेरा ही ओपिनियन है. अगेन आप जो आपको मन है वो करिए डेफिनेटली, जस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. देखो क्लियरली ये बात मैं बोलूंगा यार, टॉड बॉली क्या कर सकते थे रफीनिया के डील में. रफीनिया के डील में विद इन 48 आवर्स एक बंदा जो अग्री किया था बारसा के साथ टर्म्स ऑलरेडी, तो टेक्निकली चेल्सी ने हाईजैक किया है वो. थिंक अबाउट इट, चेल्सी ने हाईजैक करने की कोशिश की है. तो चेल्सी ने किया विद इन 48 आवर्स, भाई कर लो इसको, क्योंकि डेम्बेले आने नहीं वाला. डेम्बेले लग रहा है कि वो रिड्यूस करेगा वेजेस, तो कर लो इसको. और ओवरनाइट ऑलमोस्ट हमने किया है बिड 60 मिलियन पाउंड. ठीक है, तो यू हैव टू गिव इट अ टॉड बॉली. सेम थिंग लुकाकू. ओवरनाइट आप बोलोगे यस मे बी उनकी ऑलरेडी बातें चल रही थी, बट ओवरनाइट दे हैव डिस्कस्ड विद व्हाट दे हैव डिस्कस्ड विद पेटरचेक, विद मरीना ग्रानोस्किया, विद ब्रूस बक. और उनको चाहिए था भाई लुकाकू कंटिन्यू करे, बिकॉज व्हाटएवर कन्वर्सेशंस उन्होंने किया था विद लुकाकू मे बी इन द पास्ट वी आर टुकल. तो लेकिन टॉड बॉली क्या किए, ही डिडंट हैव मच टाइम. उनको क्या था भाई, मैं या तो उनके साथ जाऊं या तो बेसिकली मेरे कोच का सुनूं. और मेरा कोच क्या बोलता है, भाई लुकाकू बाहर अपने घर भेजो वापस, ही इज नॉट फिट टू बी हियर. और दैट्स अ रियलिटी. हाँ, आई जस्ट सेड दैट. द फैक्ट इज टॉड बॉली ने किया है भाई ओवरनाइट ऑलमोस्ट लुकाकू का डिसीजन लिया. ओवरनाइट मरीना को बोला भाई ये सब नहीं चलेगा. मरीना बोली यार अगेन इट्स अ न्यू काइंड ऑफ वे दैट चेल्सी इज थिंकिंग, इट्स नॉट मे बी माय वे और द हाईवे हो गया. और मरीना बोली ओके आई स्टे एज एन एडवाइजर टिल द एंड ऑफ द ट्रांसफर विंडो, बट आई एम गोइंग. सेम थिंग अबाउट पेटरचेक तो वो भी नहीं. पेटरचेक तो इज काइंड ऑफ चलते बने. Same thing about Bruce Buck, you can say. So I don't think Todd Boehly is to be blamed really. He has done his level best.
and the consortium as well. I don't think they had enough time. It's a problem with Chelsea and the problem with the other, जो parties involved थे in terms of ownership take over, जो इतना easy नहीं होता है. I think timing अपना luck भी बोल दो यार. I think that's why. लेकिन again, at the same time, उसी दौरान बारसा के economic levers, free हो गए. So that is something that Chelsea couldn't do anything about it. So nothing can be done. हाँ, Manchester United fans might be feeling the same way about Chelsea, जो Chelsea fans might be feeling about Barcelona at this point in time. वो भी हो सकता है. तो fair enough. And I'll come to a Manchester United fan here, absolutely. यहाँ पर we are looking for a manager to replace ETH as he has dug his own grave by retaining Maguire as captain. Oh my God, look at that. Look at that. मतलब I can agree. Like you say, Sagnik is kind of, not happy with Burley. Matata United is not happy with Ten Hag. Happy as hell. Raphinha to Barca, Chutamani. Congratulations. मैं तो खुश हूँ for him, for Barcelona, but not for Chelsea. The fact is, थोड़ा सा questionable Chutamani, and let me know Chutamani and every Barca fan out there, will Raphinha play first team football enough as much as वो खेलता in Chelsea or in Leeds? मेरा जवाब सही में no है. He will not play as much. हाँ, he'll get a lot of games, no two ways about it, but I don't think he'll play as much. Dembele will play, in my opinion. Rain Bank, yes, thank you, CFC Blues. I wasn't getting the name, absolutely. Barca pull in this disastrous condition is no joke. Fair enough. वो तो देना पड़ेगा भाई. Barca pull. I have admitted a lot of times, भाई, we are a stepping stone. We have to kind of bridge that gap, और वो हो नहीं रहा है for whatever reason. Frenkie de Jong was expected to have his annual salary increased by 8 million this year. Okay, वो एक और point है. Keeping that aside, isn't it a bit unfair to expect the player to take a what? यार माना भाई, ये comment में मुझे पिन करने का मन कर रहा है. बढ़िया comment. Again, these are all facts. These are all facts, people. Trust me. हाँ, definitely there is money coming from the other side also. तो आप दीजिए ना उसको. आप दीजिए, जो promises किए थे वो करिए. मतलब isn't it ethically? हाँ, I'm using very strong terms here. Isn't it ethically questionable कि आप Raphinha का deal कर रहे हो before even paying Frenkie de Jong? हाँ, maybe I'm wrong. Maybe Frenkie de Jong has been paid आज सुबह. I don't know. Correct me if I'm wrong. But just saying. Anyway, and yes, again, yes भाई, बहुत Raphinha के लिए बहुत खूब है. कोई नहीं ऐसा नहीं, absolutely. But yes, यहाँ पर कुछ और comments ले लेता हूँ. श्रेय पाटिल नाउ. श्रेय भाई, big up, आपको big up भी कहते हैं. And yes, people, yeah, please again, whoever is watching, do let me know what time do you want me to release short videos as well as come live. हाँ, हम काफी बार live होते हैं, as you know, but even if you can hit the bell notification icon, and not just for me, every content creator out there, आप definitely करिए भाई. सब लोग को करिए, and a simple kind of a like and a simple kind of a view and a simple kind of a comment certainly helps a lot. I'm trust me, I'm real there. लेकिन श्रेय पाटिल ने बहुत ही अच्छा मुझे help किया to kind of come up with a video of who am I. I'm pretty sure आप लोग wait कर रहे हो for the next who am I. We are working on the guests here, but to do check it out on Almighty Sports Plus. That's a great video. Do check it out. Absolutely, shout out to Shrey as well. I don't think any swap deal is worth it unless it's a centre back replacement. We need to get the basics first. Yeah, fair enough, Shrey. Shrey, what do you think about Chelsea giving Aspi to Barca? What do you think about Chelsea giving Alonso to Barca? What do you think about Chelsea giving XYZ etc. to Barca at this point in time? Not being salty, but isn't it smarter to not give them that because at the end of the day they are directly plugging their gaps हमारे players के साथ जो हुआ है with Real Madrid getting Rudiger. It's kind of Champions League में मैं तो बोलता हूँ भाई, I kind of have that ambition that नहीं, Champions League में भी हमारे rivals है. That's a reality. हाँ, nothing against Barca, nothing against the fans, लेकिन it's just smart business. हाँ, Chelsea beggars are not choosers, you will say. भाई, come on, pretty sure there will be clubs out there जो Aspi के लिए तैयार रहेगी. Azpilicueta is not over. Let's get it right. ठीक है, over नहीं है. Yes, he's not the player जो थे 2-3 साल पहले भी, लेकिन he's not over. Same thing with Alonso. Alonso यार never relied on pace anyway. So I think he fits a lot of sides. Yeah, they want to play for Barca, it's one thing, but why always Chelsea succumb to भाई legends के मांग? I think for once maybe Bayern are doing the right thing. आप बोलोगे with Lewandowski. Sources in Italy are saying Chelsea are willing to meet Koulibaly fee with Napoli. Yes. This मैं भी सुन रहा हूँ भाई Rocky. मतलब again it might come to that भाई. अगर बारसा वापस से आ जाती, मैं तो काफी बार बोला हूँ, अगर जो मीटिंग हुई we are here to have a meal जो बोला है ना मिस्टर बोली ने, भाई इतना सिंपल होता डील. मैं बोलता हूँ क्या होता डील होता भाई, आप लोग किसको चाहते हो, आपका फर्स्ट प्रेफरेंस बोलो, ऐसे भी हमें हारना ही है. आप बोलिए आप कुंडे को चाहते हो कि कुलीबाली को चाहते हो. लपोर्ता बोले भाई हम लोग चाहते हैं कुंडे को, तो हम लोग बोलते हैं चलो हम कुलीबाली के लिए जाते हैं. पक्का
तो इट्स अनटोल्ड काइंड ऑफ अ वर्बल अग्रीमेंट कर देता है और वैसा होता, वो होता डील, दैट वुड हैव बीन अ डील, बिकॉज दोनों प्लेयर्स जा रहे हैं भाई प्लेयर्स के लिए, तो वाई फाइट? रफीनिया के लिए वो हुआ है भाई, आप इसके लिए जा रहे हो, डेम्बेले हमें दे दो, वो दैट इज व्हाट अ डील वुड हैव बीन। अ डील ये नहीं है भाई कि आप दोनों को ले जाओ, हम लोग हमारे प्लेयर्स भी आपको दे देते हैं और हम लोग को वापस चाहिए प्लेयर्स, हमें 90 मिलियन पे करना पड़ेगा फॉर फ्रेंकी डी यॉन्ग। दैट इज नॉट अ डील, दैट इज नॉट अ डील। तो टॉड बॉली को बनाया गया है लिटरली, मुझे लग रहा है ऐसा, दैट्स व्हाई आई एम रिएक्टिंग दिस वे। लेकिन हाँ, ही इज स्टिल न्यू इन द मार्केट, और इसीलिए मैं वापस से बोल रहा हूँ, I think Todd Boehly not having Marina Granovskia next to him is a big issue. It is a big issue. Trust me, because she knows most of these people negotiating, और it matters. It matters भाई, बहुत चिंदगी चलती है, और हम लोग फीफा में करते हैं भाई, इमेजिन रियल में कितना होता होगा। Okay, regarding Raphinha's utilization, he will definitely start some games. Okay, fair enough. Definitely some games. He would have started almost every game in Chelsea. He would have started every game in Leeds for sure. Depay, Collado, and Abde will leave. Okay, Varane, Auba, Dembele, Raphinha, Fati, and Leva if he comes. Okay, fair enough. Options are required, and Barca no. Fair enough. और यार दिव्यांशु, like I said, उसको totally games मिलेंगे, लेकिन starts कितने मिलेंगे? I don't think so. I don't think so. He'll get as much starts as what you'd have got. हाँ, एक होता है चाह होती है एक, but again at the end of the day, भाई, it is a World Cup year. So if Raphinha is thinking he's walking into the Brazil side, or I don't know, Antony might have a say. Antony might have a say. Just saying out there. So थोड़ा सा अभी भी यार, I don't know. I don't think we should assume as players as well. लेकिन हाँ, बढ़िया comment दिव्यांशु का as always. Okay, regarding Maguire as captain, I thought Ten Hag will get command over team. Yes, which previous managers never got, but Ten Hag decisions is influenced by the board. अगेन दानिश, मेरा एक यहाँ पर यू नो मी एंड माय थियरीज, राइट? मेरा क्या लॉजिक है, मेरा क्या थियरी है, अगेन यार मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब तो डेफिनेटली कर दो भाई सब लोग। मैं शायद एज ऑलवेज मैं भूल जाता हूँ टारगेट डालना, लेकिन आपको पता ही है जो लोग आते हैं रेगुलरली भाई। टेन हाग इज डोंट गेट मी रॉन्ग, बीइंग अ डच सपोर्टर, आप लोग को सब पता है जो भी रेगुलरली आते हैं, बीइंग अ डच सपोर्टर आई हैव फॉलोड हिज कोचिंग स्टाइल, आई लव इट डेफिनेटली, नो टू वेज अबाउट इट, मैं झूठ नहीं बोलने वाला। लेकिन is he a man manager? Is he a person who will kind of take things by the scruff of the neck? हाँ, compared to many other managers available वो थे, no two ways about it. लेकिन is he that for Manchester United egos and Manchester United board? और वही आ जाती है problem जो Manchester United as a fan you might have faced previously. Can Ten Hag bridge that gap? अभी तक लग तो नहीं रहा है मुझे, क्योंकि यार अगेन मे बी आप बोलोगे फॉर द प्लेयर हैरी मैग्वायर, उसके कॉन्फिडेंस के लिए कि यार कैप्टन रहेंगे एंड ऑल दोस थिंग्स, बट अगेन आई नो आई एम कैचिंग वर्ड्स, यहाँ पर नहीं होना चाहिए इतना पिकी, और मैं खुद के लिए बोलता हूँ भाई आप लोग जज मत करो, लेकिन he could have said that नहीं, रोनाल्डो wants to stay versus रोनाल्डो यहीं रहेंगे, he is not for sale. These are two different things people, trust me, these are two different things, और इन लोग के PR मैनेजर्स रहते हैं, तो अगेन इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगेन पीपल जॉइन लेट, मैंने ये दिखाया था, आप रीड करो बॉडी लैंग्वेज। Thomas, do we sign Cristiano Ronaldo? I'm not telling you. I'm not telling you. That simply saying. And yes, people, come on, let's get in the likes. Pretty sure भाई आज काफी बार्सिलोना की जनता होगी, काफी मैनचेस्टर यूनाइटेड की जनता भी होगी, वो लोग बेसिकली नहीं चाह रहे होंगे लाइक देना आपका, मैं कुछ नहीं ले रहा यार, एक लाइक ले रहा हूँ बस, और दुआ ले रहा हूँ आपकी, तो लाइक कर दीजिए डेफिनेटली, और यस डेफिनेटली थैंक यू फॉर कमिंग ऑन, कैन नॉट थैंक यू इनफ, बिकॉज आई नो आप लोग भी यार मंडे इवनिंग है, काफी थके मारे आए होंगे। अब तो ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे सेंटर बैक में चेल्सी के लिए, उपमैकानो और कुलिबाली ही ऑप्शंस लग रहे हैं। चलो यार, तो सब लोग चैट में बता दीजिए द फैक्ट यार वी आर बेसिकली गेटिंग द रिजेक्ट्स, हाँ दैट्स अ रियलिटी, आज मैं भी बोल रहा हूँ, बिकॉज नेथन आकी आ रहा है चेल्सी, लुक्स लाइक वो आ जाएगा, ठीक है, नेथन आकी को ऑलमोस्ट मोड है, किम्पेम्बे और आकी में एक ही आएंगे, लेट्स गेट इट राइट, ठीक है, तो आकी आएगा चेल्सी, इज आकी रिक्वायर्ड इन सिटी? नहीं, स्टर्लिंग इज कमिंग एट चेल्सी, ब्रिलियंट, मैं तो बोलता हूँ वहां पर सिटी शायद थोड़ी सी गलती कर रही है इन माय ओपिनियन, लेकिन हाँ स्टर्लिंग कमिंग हियर, is he required at City by them? नहीं, तो he is coming. और meanwhile, are those clubs upgrading in those positions? हाँ, they are. मतलब I know we are talking about Guardiola, जो supposedly interested नहीं थे to leave Leipzig. अभी भी यार ऐसे नहीं बोले कि यार interested है, but Leipzig also didn't want to sell him. I am telling you right now कि भाई Guardiola is going to Man City. You heard it here first. आपने सुन लिया है, Josko Guardiola is going to Man City. I've just said it. Yes, you heard it there. Absolutely, Man City fans. यार सबको पता है. I kind of follow all the news, and I'm telling you,
Guardiola is going. तो wasn't Guardiola Chelsea's first choice? Wasn't, yeah, मेरी पहली choice नहीं थी. मैं तो अभी भी बोलता हूँ in the Premier League I would rather have an Aki than an Guardiola. Yes, आप लोग बोलोगे deluded है बंदा, लेकिन for this year he's better. For long term Guardiola is better. ठीक है. लेकिन Tuchel का फर्स्ट चॉइस था Guardiola. ठीक है, वहां पर we won't get him. What about Bayern Munich? Bayern Munich का again the fact is we wanted Ligt. No two ways about it. हमने कोई सीक्रेट नहीं रखा. मे बी यार डिफरेंस क्या है मैं बोलूं, चेल्सी का क्यों प्लेयर्स नहीं आ रहे, बिकॉज दीज आर ऑल बिजनेसेस यार, सब बिजनेस है. और सब क्लब्स के पास एक स्टेबिलिटी है कंपेयर टू चेल्सी. दे आर एटलीस्ट हैविंग एक नेगोशिएटर है जो ऑलरेडी था वहां पर. दे आर हैविंग अ डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल. काफी केसेस में दे आर काइंड ऑफ डिस्कसिंग थिंग्स ऑलरेडी. हमारा कोई है नहीं, तो हम क्या आ रहे हैं, वी आर जस्ट जंपिंग द गन. हमें मौका मिल रहा है तो वी आर गोइंग फॉर इट. यस, वी आर आल्सो हाईजैक एफसी, और यहाँ पर चेल्सी आर नॉट डूइंग द राइट थिंग एथिकली आप बोलोगे, बट डू वी हैव एनी अदर चॉइस, क्योंकि वी डोंट हैव अ मरीना ग्रेनोस्किया. तो क्या हुआ है, डिलिक्ट का हमने कर दिया, बवाल मचा लिया कि चाहिए. पहले क्या करते थे, डिफरेंस क्या था, वी यूज्ड टू डू लॉट ऑफ बिजनेस बिहाइंड द डोर्स. अभी भी यार बिहाइंड द डोर्स ही होते हैं डेफिनेटली, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि यार खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे, वो नहीं हो रहा है. लेकिन एब्सोल्युटली काइंड ऑफ न्यूज आ रही है 90% जो चेल्सी कर रही है, राइट. पहले क्या बहुत ही कम आता था. दिस ईयर फॉर ट्विटर, चेल्सी ट्विटर न्यू. आई कैन रियलाइज दैट, मैं काफी साल से हूँ ट्विटर में भी. आई कैन क्लियरली रियलाइज, एंड यस पीपल डू फॉलो मी ऑन ऑलमाइटी ब्लूज एफसी ऑन ट्विटर, क्विक सेल वहां पर. हैविंग सेड दैट, डिलिक्ट का इतना शोर बचा है, और सबको पता है चेल्सी का फाइनेंशियल सिचुएशन, चेल्सी का ओनरशिप सिचुएशन. भाई ऑलरेडी इतना प्रॉब्लम थी विद यूवेंटस एटसेट्रा, और आ गए हैं बायर्न म्यूनिख और ले लिए बायर्न म्यूनिख. और बायर्न म्यूनिख का क्या है भाई, हम लोग ले लेते हैं डिलिक्ट, आप लो उपमेकानो. हाँ, वो बाय द वे नहीं आने वाला मेरे ख्याल से. दैट इज मोर लाइक अ जर्नलिज्म इन माय ओपिनियन. हाँ, लेकिन थोड़ा सा अपने आप नहीं आते ना स्टोरीज, कहीं से ना कहीं तो आया होगा ना. तो वी आर काइंड ऑफ गेटिंग द रिजेक्ट्स, दैट्स हैपनिंग. तो आई डोंट नो इफ at the end of the day we'll ever even be able to get a Upamecano or a Koulibaly. I hope कि Koulibaly changes his mind कि वो यूवेंटस नहीं जाए. लेकिन यूवेंटस किसके लिए जा रही है भाई? यूवेंटस आर आल्सो डूइंग अ मैडनेस. सब लोग भाई, हाँ, पॉल पॉगबा और एंगल डी मरिया हैव बीन अनाउंस्ड, राइट. इमेजिन दैट मिडफील्ड, मैं काफी बार बोल चुका हूँ लास्ट हफ्ते में. पॉल पॉगबा, who's playing a cam, उनके पीछे बेसिकली यू हैव अ लोकेटेली, यू हैव अ जकारिया, और यू हैव अ मैकेनी. तीन में से दो लोग होंगे. और लेफ्ट साइड में कौन है? किएजा. राइट साइड में कौन है? डी मरिया. ठीक है, इमेजिन करो. और ऊपर कौन है? व्लाहोविच. वैसा बेसिकली मिडफील्ड और अटैक. यू डोंट हैव अ गुड डिफेंडर फॉर रियल. आई थिंक दे विल गेट कुलीबाली, माय ओपिनियन. इसलिए मैं बोल रहा हूँ चेल्सी और बार्सा को पहले कर देना चाहिए था, बिटवीन कुलीबाली एंड कुंडे कर देना चाहिए था खत्म. लेकिन आई फील दैट चेल्सी माइट जस्ट end up with a super backup. I don't know कौन है भाई. नेथन आकी के अलावा we still want 2 more defenders as per Tuchel. He's going for 3 defenders. He needs 3 defenders including Aki. तो Aki आएगा, और आप बोलियो कमेंट में और कौन 2 डिफेंडर्स आएंगे चेल्सी में, बिकॉज जॉनथन क्लाउस भी मार्से का लग रहा है, एंड सर्जिनो डेस्ट अभी भी एडवांस नहीं है. आई थिंक we'll still go for सर्जिनो डेस्ट because he can play on both the sides, और अमेरिकन है. तो आई स्टिल फील दैट सर्जिनो डेस्ट का होगा. मैं अग्री नहीं करता हूँ कि वी शुड डू बिजनेस विद बार्सा डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ स्वैप, लेकिन पैसों में आए तो व्हाई नॉट. ठीक है, तो सर्जिनो डेस्ट आएंगे. एंड वन सेंटर हाफ कौन आएगा आप बोलिए कमेंट में. हु इज द मोस्ट लाइकली सेंटर हाफ दैट चेल्सी इज गोइंग टू साइन, क्योंकि मेरे ख्याल से उपमेकानो डजंट फिट द चेल्सी बिल, और बायर्न म्यूनिख के पास भी इतने सारे सेंटर हाफ नहीं है, तो दे स्टिल वांट उपमेकानो इन माय ओपिनियन. अंकित भाई, जेरार्ड मुलर, बायर्न का लेजेंड प्लेयर, दे केप्ट हिम फोर्सफुली बिकॉज़ ही वांटेड टू जॉइन बार्सिलोना. इंटरेस्टिंग. दैट्स अ ग्रेट काइंड ऑफ breaking Matt Law, Chelsea appoint new board member Amit Shah. Pratham man, always. Pratham भाई इतने ranted serious discussion को मजे में कर देते हैं. Pratham always, I like that fact. Who will be Chelsea's backup striker this year if Havertz is willing to play as centre forward? Havertz is the centre forward. Period. जो लोग बोल रहे हैं ना भाई, he is more of a cam, he's more of a whatever wide forward. I don't think they watched every minute of him. Dead Sky Gaming. I believe that, again, if you actually carefully see Tuchel के press conferences, Havertz के लिए, whenever the journalist asks, right, Havertz is your false nine, he says no, he's a number 9. Like he plays that position. ठीक है, तो Havertz plays that position proper. और अभी भी काफी young है. He can get molded properly into that. हाँ, he's not ready yet.
but he is going to be that. Having said that, as per the reports, so 3-4-1-2 with Havertz and Sterling kind of playing together लग रहा है मुझे. लेकिन अगर हमारे पास वो 3-4-1-2 में Ziyech नहीं रहते हैं, we might need him. अगर Ziyech नहीं होते हैं, then what do you think भाई? मतलब Ziyech might be needed because I don't think Mount अगर 3-4-3 जाए तो Mount खेल सकते हैं lot of games on the right hand side, especially जहां पर low block teams होती है. You need someone to open them up, और that is Hakim Ziyech. Hakim Ziyech सब लोग बोल दीजिए. Should Chelsea जो संन्यास लेना का सोच रहा था ना Hakim Ziyech, he was like नहीं मैं अपने आप करूंगा, सब चीज करूंगा, I don't have any agent, what not. Is he going to go to AC Milan, or should AC Milan go for Asensio? Hakim Ziyech मेरे लिए अभी यार, like किसी ने बोला यार, you still have to keep them players irrespective of them being happy or not. I think we might have to keep Hakim Ziyech, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता एक अटैकर है who's a pure winger in Chelsea apart from a Christian Pulisic. हाँ, हडसन ओडोई को काउंट नहीं कर रहा because I don't see him being ready to start. In starters we don't have a pure winger apart from Pulisic, और हमें सब पता है Pulisic कितने injury prone है. So let's get it right. We need Hakim Ziyech at this point in time. I won't sell him just as yet. People talk about Laporta, but backup striker, again coming back to the question, I think Depay हो सकता है from what the reports are. Again, swap में मैं नहीं चाहूंगा. मैं चाहूंगा if it's a low price, definitely bring it on. क्योंकि यार he kind of suits that floating striker role. People talk about Laporta, but Alemany is the real when it comes to transfers. Working his magic just like he did during the winter transfer window. I don't know यार अक्षित, मयूर अक्षित sorry, आप पता नहीं यार, आप with the whether you will give credit to Alemany and Laporta, क्या आप basically credit दोगे to La Liga to kind of get those rules in place, or would you blame FIFA? I don't know यार, काफी सारा question marks है in my opinion. Again आपने शायद मिस किया होगा तो देख लीजिए. Again not being salty, just throwing the fact जो मुझे मालूम है. अगर आपको अलग फैक्ट्स मालूम है तो प्लीज लेट मी नो. ग्वार्डियोल का थोड़ा कमेंट ले लेते हैं सिटी फैन से. ग्वार्डियोल इज मोर ऑफ अ प्रोस्पेक्ट एंड सूट्स अ रोटेशनल रोल. ओके, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, बिकॉज अगेन जो लोग सोच रहे हैं पाउ टॉरेस आएंगे, भाई पाउ टॉरेस अगर आएंगे ना, उनके हिम एंड अगेन इफ यू रिमेंबर पाउ टॉरेस एंड अपने क्या नाम है भाई, लपोर्ट, एमेरिक लपोर्ट और पाउ टॉरेस एक्चुअली स्टार्टेड फॉर स्पेन इन द यूरोज. ठीक है, आई रिमेंबर दैट मैच एज वेल, हमने हुएमाई में भी दिया था. तो इमेजिन Guardiola is a better prospect because definitely yaar Pau Torres will not be happy sitting on the bench as much as basically how Aki was, right? I agree, 100% agree. मानव का comment बहुत interesting comment है, लेकिन Guardiola को चेल्सी में आने में दिक्कत क्यों थी? मानव बोल दीजिए थोड़ा, come on, सच्चाई हो जाए थोड़ा आज. Angela, please consider my humble request and tell everyone to use United. और oh yes, by the way, Danish, big up to मोक भाई. मोक भाई, और अगर मैंने गलती से मैन्यू बोला है यार, मैं भी अपोलोजाइज करता हूँ टू ऑल द मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस. डेफिनेटली यार मैंने देखा है, और इनफैक्ट आई न्यू दिस फ्रॉम बिफोर एज वेल, लेकिन वो ये आदत, बुरी आदत पड़ जाती है तो बहुत मुश्किल से छूटती है, वही बात है. लेकिन यार आई डोंट थिंक वो इंटेंट करते हैं बोलने के लिए. दानिश, हैविंग सेड दैट, अगर मैं बोलता हूँ भाई मुझे भी बता दीजिएगा चैट में नेक्स्ट टाइम अगर मैं बताता हूँ. लेकिन हाँ, डेफिनेटली एवरीवन चेक आउट मोक भाईज वीडियो. मैंने खुद चेकआउट किया है, मैंने कॉमेंट भी किया वहां पर. वन एमवीएफसी बाई चांस आपको नहीं मालूम है, मैं शाउट आउट दे रहा हूँ. डेफिनेटली उनको बिग शाउट आउट है, क्योंकि यार वो बनता है देखना. इट्स अ वेरी शॉर्ट वीडियो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जाकर देखिए. और उसी बात पर भाई हमारे शॉर्ट वीडियोस भी देखा करो थोड़ा, डेफिनेटली अच्छा लगता है. और थोड़ा कमेंट फीडबैक भी दिया करो, मजा आएगा. भैया नापोली ने न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है कुलिबाली ऑफ 6 मिलियन पर ईयर, प्लस फ्यूचर में बोर्ड डिसीजन कंट्रोल्स का कुछ है. अरे भाई, नापोली डूइंग अ पीएसजी, व्हाट इज दिस रॉकी सोर्स बताइए. लेकिन आई वाज हियरिंग दिस एनीवे, वो आने वाला था भाई. नापोली के लिए लेजेंड है, टॉक अबाउट लेजेंड्स, ही इज अ लेजेंड फॉर नापोली. लेकिन भाई आप बोलिए रॉकी है, आई नो यू आर चेल्सी फैन, भाई आपको क्या लग रहा है, लेवेंडोव्स्की चेंज करेंगे अपना मन, आएंगे चेल्सी? या क्योंकि रोनाल्डो तो आज काइंड ऑफ 50-50 लग रहा है मुझे. अभी भी नहीं बोलूंगा भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस वुड लव, क्या जो बोल रहे थे एरिक टेन हाग सच है, लेकिन मेरे को नहीं लगता वो सच है इन टर्म्स ऑफ इवन हैरी मैग्वायर. तो अभी के लिए ही जस्ट हैंडल द मीडिया, क्योंकि वो बोल सकते थे दैट ही इज नॉट फॉर सेल, एंड उसने खुद ने बोला है वो नहीं जाना चाहते. दैट्स हाउ ही कुड हैव कंप्लीटेड, और रादर सेड ओनली द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, राइट? हाँ, मे बी मैं वर्ड ज्यादा कैच कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग. तो रोनाल्डो और लेवेंडोव्स्की दोनों में चांस है. चेल्सी टाइम खोटी कर रही है, या हमें जाना चाहिए डायरेक्ट नेमार के लिए जो गैल्टियर बोल रहे हैं अभी खिलाना चाह रहे हैं, ऑल दोस थिंग्स. पता नहीं यार, कोई तो खेल रहा है मीडिया के साथ जस्ट टू काइंड ऑफ मेक देयर टाइम काइंड ऑफ मैनेजेबल. पाउ टॉरेस आएगा टू चेल्सी. अरे भाई
मैंने तो सबसे पहले बोला फुटबॉल किंग्स और सोनी टीवी, यस आई वाज ग्लैड टू बी देयर एंड यस व्हेन जॉन डेक्स आस्क्ड मी आई वाज लाइक ये पाउ टॉरेस ला दो, ये पहली साइनिंग होनी चाहिए चेल्सी में, दैट वाज माय थिंग, द फर्स्ट साइनिंग शुड बी पाउ टॉरेस, फर्स्ट वन। और मुझे यार मैं काफी बार बोल रहा हूँ चेल्सी, यू नो इट्स इजी टू से कि वी क्रिएट सो मेनी चांसेस, हम फिनिश नहीं करते एटसेट्रा राइट। आप देख लो अंडर एंटोनियो कॉन्टे एंड जोसे मोरिन्यो सेकंड स्टिंट, Hazard, agar he would have not scored the goals or Hazard wouldn't have created so many chances, where would Chelsea be? सच में बोलिए सब लोग, where would Chelsea be without Hazard all those years? I'm telling जो 2014 सीजन से लेकर 2018 तक और 2019 तक इवन यूरोपा लीग, where would Chelsea be? क्योंकि वो सिंगल हैंडेडली जिताता था भाई गेम्स, दैट वाज द डिफरेंस। आज के दिन में डू चेल्सी हैव सच अ प्लेयर? नो। अच्छा, दैट वाज वन एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, बिफोर दैट 2010 तक, हाँ ड्रॉगबा लेजेंड, आई लव द गाय, लैम्पार्ड लेजेंड, आई लव द गाय, लेकिन काफी लोग भूलते हैं भाई जॉन टेरी इज द हाईएस्ट स्कोरर एज अ डिफेंडर इन द प्रीमियर लीग। हाँ एशली यंग बोलोगे, कम ऑन, एशली यंग इज नॉट रियली डिफेंडर पीपल, कम ऑन, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द करियर बने थे डिफेंडर, लेकिन जॉन टेरी इज द हाईएस्ट स्कोरिंग डिफेंडर इन द प्रीमियर लीग, ठीक है, दैट मेड अ डिफरेंस। सो पाउ टॉरेस, आई एम नॉट कंपेयरिंग टू जॉन टेरी बिफोर पीपल क्लिप मी, all I'm saying is Pau Torres, even Nathan Ake to some extent, have that ability to score goals in the 6-yard box. They have it. ठीक है, वो डिफरेंस है वर्सेस a lot of center halves. हाँ बॉल प्लेइंग बोलते हो, ये बोलते हो भाई, goals win you games at the end of the day. Napoli president said they will never sell Koulibaly to any Italian club recently. Anish, yeah, वो भी मैंने पढ़ा था, but again money talks भाई, money talks. Bayern are doing this not the first time. Gerard Muller, exactly, आपका ही comment मैंने पढ़ा था, Ronaldo. Why Barca is not signing left-footed centre back like Pau Torres instead of Koundé? Koundé is right-footed centre back, but to play excellent game or passing, they need one left-footed and right-footed centre back. बढ़िया comment भाई। हाँ, Umtiti का क्या हुआ है? Maybe they're not signing, that's why, because Umtiti might stay in Barca, who knows? लेकिन Bijoy and every Vijay and every Barca fan out there, आप बोलिए, मैं तो बार-बार यही पूछ रहा हूँ बारसा के लिए, और मैंने शायद मुक्तेश भाई से बात किया था, मार्कोनी से बात किया था इसके बारे में। आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि would you want a Jules Koundé on priority or would you basically want a De Jong to keep on priority? और जवाब क्या था मालूम है? कि Jules Koundé. I was surprised, but again he's a Barca ultra, so I have to kind of go with him. लेकिन इवन यू गाइस यार, मेरे सब्सक्राइबर जो है बारसा फैंस, आप भी बोलिए, और लालिगा फैंस जनरली भी आप बोलिए भाई, सब लोग, am I not supposed to be surprised? Barcelona have an Eric Garcia. Why did he leave City? Anyone? Come on, we all know why he left City, come on. Christensen, similar reasons why he left Chelsea, you can say. Eric Garcia, Christensen, Araujo is the next big thing already. एंड पीके जो खत्म नहीं हुआ है अभी तक, इन माय ओपिनियन, राइट, अभी भी है 12 महीने कम से कम, मैं तो बोलता हूँ 18 महीने है पीके और सर्जियो बुस्केट्स के पास प्रॉपर टू प्ले इन द फर्स्ट टीम, यस। तो उसके साथ यू आर गोइंग फॉर अ फिफ्थ सेंटर बैक, ओके, हु इज वांटिंग गेम्स एज वेल टू स्टार्ट, क्योंकि कुंडे को वर्ल्ड कप खेलना है, याद रखो सब लोग, कुंडे को वर्ल्ड कप खेलना है। तो इज कुंडे बीइंग साइंड एज द राइट बैक, इसीलिए शायद विजय जा रहे हैं, क्योंकि यार अगर एसपी नहीं आते, then maybe Koundé is your right back along with Araujo. I'm just saying. Maybe or they play 3 in the back. Lot of questions here. Ziyech is still not in the best like he used to play in Ajax. I hope Ziyech gets the touch. But has he played to a system just like a Lukaku? वही debate आ जाती है। लेकिन Ziyech ऐसा नहीं यार, he's thrown his toys out of the pram. He's been professional. तो यार he's not been professional with Moroccan team to some extent. You can debate. But definitely with Chelsea he's been very professional. तो यार मैं तो बोलूंगा बस Ziyech को टाइम दीजिए, और मुझे लग रहा है looking at Tuchel's interviews he will go 4-1 a lot of time, तो वहां पर Ziyech can be a good addition. Ziyech will leave for AC Milan, Rocky M, yeah that looks likely, लेकिन देखते हैं भाई क्या होता है, मतलब अगेन मैं चाहता हूँ कुछ, लेकिन अगर Ziyech जाता है, who is that player Chelsea should get? Should we get a proper striker and play Raheem Sterling on the wing if we go basically a 4-3-3 by chance? और नहीं तो वी जस्ट साइन बेसिकली एक और विंगर और फॉल्स नाइन काइंड ऑफ थिंग, जो डिपाई है, डिपाई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ही कैन प्ले एज अ विंगर, लेफ्ट फॉरवर्ड एज वेल एज अ स्ट्राइकर। आप बोलिए मुझे, हाउ डू यू रेट दिस बैक फोर? प्रथम पूछ रहे हैं एसपी, चालबा, कुंडे एंड चिलवेल। अरे भाई साहब खत्म हो जाएगा वहां पर ये बैक फोर भाई। इट्स दे आर हैविंग लॉट ऑफ पोटेंशियल बिकॉज चालोबा इज देयर, कुंडे इज देयर, बट
Chilwell is the only guy जो मैं चाहूंगा starts in a back four, in a top team which wants to win the Champions League. सच में बोलता हूँ भैया. डिपाई क्यों? वो भी तो यूनाइटेड में फ्लॉप था. अरे मतलब एवरीडे इज नॉट अ संडे रॉकी. एवरीडे इज नॉट अ संडे. डिपाई जब यूनाइटेड में आया एक तो काफी यंग था. सेकेंडली ही वाज मोर ऑफ अ विंगर एट दैट टाइम देन अ स्ट्राइकर. ठीक है, आज के दिन में ही मोर ऑफ अ स्ट्राइकर देन अ विंगर. ठीक है, वो डिफरेंस है. प्लस यूनाइटेड जो सिस्टम खेलती थी इट्स नोवेयर क्लोज टू जो चेल्सी सिस्टम खेलती है. और यहाँ पर एज पर रिपोर्ट टुकल खेलना चाहते हैं 2 फॉरवर्ड्स विद 1 बिहाइंड देम. तो अगर वो सच है तो यार डिपाई काइंड ऑफ वर्क्स ब्यूटीफुली. हाँ, ही इज नॉट अ गुड फिनिशर, वहां पर लैक करता है, तो दैट आई अग्री. Can Depay be a good signing for Chelsea? No speculation about it, just an analysis. There was a rumor, Dead Sky Gaming, there was a rumor. But yes, by the way, people are joining in. Do like the stream, bhai, bhulna mat. Or yes, we do release some short videos as well. Definitely, aap batao bhai kab hum kare, so that we'll do according to that. Because yes, a great short video helped by Shrey Patil is there. Definitely, big up to TCSV on Almighty Sports Plus. डिफ्राई का प्रॉब्लम ये है कि यार डिफ्राई फोर इन द बैक में नहीं खेल सकते इतना अच्छा. इन माय ओपिनियन ही कैन नॉट. हैविंग वॉच्ड डच फुटबॉल अ लॉट, आई एम सेइंग इट आउटराइट. नहीं खेल सकते फोर इन द बैक में इतना अच्छा. स्पेशली अभी, मे बी दो साल पहले ही कुड हैव बीन मोल्डेड. अभी यार आई डोंट सी हिम गेटिंग मोल्डेड. तो यार डिफ्राई 3 द बैक इतना रिजिड नहीं चाहिए मुझे. दैट्स द ओनली पॉइंट. हाउ ओके, साबन पूछ रहे हैं जेम्स सिल्वा चालोबा चिलवेल. I am not convinced with Chalobah. Yes, people are. मतलब मैं यहाँ ये भी बोलूंगा, people might again say that भाई अंकित भाई deluded हो गए थोड़ा. Okay, Lampard when he was not playing Tomori, I agreed with Lampard. Yeah, you heard it right. You heard it right. Because people, मैं ऐसा बंदा हूँ ना जो बेसिकली हर एक चेल्सी का प्रैक्टिस गेम होता है, ट्रेनिंग होता है, कहीं भी आता है, कहीं भी कारबाओ कप का गेम होता है, अगर टेलीकास्ट नहीं करती ना कहीं से ढूंढ के जुगाड़ करके देखता हूँ हर एक सेकंड. ठीक है, मैं वैसा बंदा हूँ. तो मैं उसी सीजन की बात करता हूँ. टोमोरी, मैं क्यों बोलने वाला मैं बोल रहा हूँ. टोमोरी भाई कैराबाओ कप में 3-4 ब्लेटेंट प्रॉपर मिस्टेक्स किए थे which could have led to a goal. प्रॉपर. ठीक है, एंड दैट कंसेक्यूटिवली हैपेंड. ही डिड वेरी वेल फॉर 89 मिनट्स इन अ गेम. लेकिन वो 1 मिनट बीच में उन्होंने किया. एंड यस, ही वाज यंग. आप एक्सपेक्ट भी करोगे एट दैट पॉइंट. आज का टोमोरी नहीं, आई एम टेलिंग अबाउट 2 साल पहले का टोमोरी. ठीक है, तो ऑन फॉर्म बिकॉज हमारे पास थे काफी सारे प्लेयर्स, यू वुड यूज अदर प्लेयर्स. दैट इज सिंपल. हाँ, थोड़ा सा गलती किया थी टोमोरी को, थोड़ा 1-2 मैच दे देना था बीच में, वो प्रॉब्लम थी. सेम थिंग अब रोडिगर. तो चालोबा का मैं बोलता हूँ वही चीज है. चालोबा का ही हैज ब्रिलियंट थ्रू बॉल्स. ओके, ही हैज प्लेड एज अ डीएम एज वेल इन फ्रांस. ठीक है, और ही समवन हु हेड्स द बॉल वेरी वेल एज वेल. ठीक है, लेकिन आई थिंक किसी ने देखा है कैराबाओ कप फाइनल, किसी ने देखा है एफए कप फाइनल. There was a moment जहां पर चालोबा could have given a penalty, could have given a goal. ठीक है, हाँ, अगेन मैं बहुत ही पिकी हो रहा हूँ because it's Chelsea Football Club. You're talking about a starter for Chelsea Football Club, so I don't see Chalobah being a starter for Chelsea Football Club even right now. हाँ, lot of fans on Twitter are going absolutely, वो घोड़े के नाल होते हैं ना, घोड़े जैसे होते हैं. They just look at Chelsea all the time. Again, respect to all the fans, but I'm just saying what I feel about them. I respect their opinion, fair enough, but I'm saying that I don't agree with it. Because all they do is they praise Chelsea and they praise every Chelsea academy player and they praise every Chelsea player no matter what. That is not how it is. Come on. As fans, we are also there to criticize our own players. There is a thin line between being as in being a critic and being really maniac in terms of criticism. लेकिन हाँ, मैं बोलूंगा चालोबा still has time. Definitely मैं बोलूंगा चालोबा has to be in the Chelsea squad. No two ways about it. He has to be given minutes, but not as a starter. So you just heard my rant on Chalobah and Tomori there. People like Karji usme, and I genuinely mean it. Yeah, Ziyech would suit better in Pioli's system than Asensio. Yeah, since Asensio likes to cut inside and Ziyech likes to stay wide. Manav, actually Ziyech can do both the things, but I hear you absolutely, bhai. Asensio zyada cuts inside than a Ziyech. I agree with you 100%. Lekin remember, Ziyech at Ajax has also played as a cam a lot of times. After listening to Ten Hag, he is keeping space if any of his statement ends up being false. Like if Ronaldo left, he will stay. He will say he will not say sale. Okay, fair enough, Danish, fair enough. But again, वही है ना. That's why मैं as an opposition fan will still analyze and maybe overthink कि भाई उन्होंने ये नहीं बोला है कि Ronaldo wants to stay. उन्होंने ये बोला है he's not for sale.
There's a difference. I'm just kind of, not to kind of piss off Man United fans. I'm just kind of letting you know that अभी भी यार पूरा picture भी बाकी है. Basically, what I'm trying to say. Whitey? Who's Whitey? VITY क्या है भाई? कोई मिस कर रहे हो क्या? कोई नहीं. Maybe there's a spell check problem. लेकिन why are Chelsea not going for power? Chelsea, okay, fair enough. मैं सोचा Whitey कौन है? Chelsea are not going for Pau Torres. मेरे ख्याल से यार एक तो प्राइस बहुत ज्यादा होगा और again there might be a case that हमें ये चाहिए था कि यार we get as per reports again हमें 3 डिफेंडर्स तो चाहिए, ठीक है, 2 सेंटर बैक्स एंड 1 विंग बैक, ठीक है, 3 डिफेंडर्स चाहिए, उसमें विंग बैक और फुल बैक जो भी बोलो, तो एक मिनिमम चाहिए प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर, दैट इज एज पर रिपोर्ट्स, ठीक है। और उस हिसाब से देखा जाए तो नेथन आकी जो प्लेयर, और अगर नेथन आकी भी है, पाउ टॉरेस भी है, तो नेथन आकी के लिए भाई क्या ही तो फायदा हुआ चेल्सी में आके। इमेजिन, यस, इफ यू आस्क मी पाउ टॉरेस और नेथन आकी, डेफिनेटली पाउ टॉरेस, डेफिनेटली। हाँ, मैंने बोला है नेथन आकी और किम्पेम्बे, तो मैंने बोला है नेथन आकी, बट पाउ टॉरेस और नेथन आकी, इट हैज टू बी पाउ टॉरेस। लेकिन आई थिंक नेथन आकी का द फैक्ट दैट ही इज अ चेल्सी बॉय, मतलब people forget भाई, he was the captain of the academy as well lot of times, ठीक है, he has actually played with Christensen all those years, ठीक है, he has actually learned a lot in Chelsea। हाँ, तो at some point you will say, or he's a Premier League winner, people forget that he is a Premier League winner with Chelsea, he played 6 months for Chelsea, not 6 months, 5 months under Antonio Conte, ठीक है, he is a Europa League with winner with Chelsea। तो थोड़ा सा एक होता है ना चेल्सी एलिमेंट, इसलिए they are going with him rather than Pau Torres, और दोनों तो शायद ही लेंगे। I know टू राइट फुटेड सेंटर हाफ आते, टू लेफ्ट फुटेड क्यों नहीं आ सकते, देयर इज अ लॉजिक। लेकिन भाई सेम थिंग हैपेंड विद सिटी ना, ही वाज देयर एट सिटी, डिड ही गेट इनफ गेम्स? नहीं, आई डोंट थिंक सो। सम व्यूज अबाउट मेसन माउंट, अरे मेसन माउंट, अमन अगेन, काफी लोग जस्ट गोइंग बैक टू द ट्विटर जनता, भाई मेसन माउंट को तो ऐसे पूछते हैं कि क्या है, मतलब बेसिकली वो दूध का धुला हुआ है, कोई भी नहीं है आज के दिन में। मेसन माउंट हैज लॉट्स टू इंप्रूव, बट I have gone on record saying that along with Kovacic, current squad में he is my favorite Chelsea player। और क्यों का रीजन यही है, the Mason Mount is someone जो जो हडसन ओडॉय का लेते हैं, हडसन ओडॉय also is a Chelsea boy, और हाँ, every individual is different, you cannot treat everyone same, वो agree मैं करता हूँ। हडसन ओडॉय को बोला गया भाई आप राइट विंग बैक खेलो, ठीक है, राइट विंग बैक खेले, हक दिए, और जो भी इंटरव्यू आता था he made sure he tells that नहीं, मैं फॉरवर्ड प्रेफर करता हूँ। चलो, he might prefer, but there is a way that you put across, there is a way that you apply yourself pitch पे, आप apply किए हो अपने यार। Christian Pulisic, there were matches when Christian Pulisic plays as a striker, then move to a winger, then move to a wing back, ठीक है, he didn't say anything, he's Captain America। हडसन ओडॉय क्या हो भैया आप? तो Christian Pulisic और Mason Mount and Timo Werner also to some extent are examples, और वो होते हैं ट्रू प्रो के एग्जाम्पल्स, वही होना चाहिए। मेसन माउंट, रेस्पेक्ट मैन फॉर दैट, लेकिन हाँ, he has lots to improve, और मैं चाहता हूँ भाई, प्लीज भाई साउथगेट थोड़ा सा कम यूज करो भाई मेसन माउंट को। सितंबर में लंबा सीजन है, काफी खेला है, तो सितंबर में जो ब्रेक आएगा ना उसमें प्लीज कम यूज करना, प्लीज। Guardiola pull might have been the reason for attracting Guardiola, just guessing। I agree with you, Manav. Unfortunately, I have to agree. Guardiola is GOAT in terms of manager already. Yeah, he's there. Tuchel definitely won the Champions League, but nowhere close to Guardiola. So you have a great point there. Absolutely, I agree. And of course, every player wants to improve, and every player has improved. Maybe that is why हम नेथन आकी के लिए जा रहे हैं. We feel that he's improved. And मानव आप बोलिए भाई, नेथन आकी definitely improved तो की है ना. La Liga is the hardest FFP rows. Barca showed us profit with the new economic deals. Hence, they are now in the 1:1 bracket to sign players, and not for La Liga's love for Barca. Trust me, they hate Barca. Okay, Divyanshu. Again, being a La Liga ultra and a Barca ultra, I definitely respect your opinion. I get there, but again, I'm saying a certain examples ले रहा हूँ ना. These certain examples में question करता हूँ, not generally on the whole, right? But I have big respect to you all, no problem at all. Who is managing Barca's finances? Why sign Raphinha for 73 million euro when you cannot pay Jong? सौविक भाई, आप लेट आए हो भाई, आपने सुनना है मेरा रैंट। या इट वाज अ रैंट, हाँ, इट वाज मोर विद फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू मी, बट अगेन दिव्यांशु एंड ऑल अदर बार्सा फैंस आल्सो करेक्टेड मी, सो फेयर इनफ। बट हाँ, देयर इज अ लॉट ऑफ अभी भी अनटोल्ड स्टोरीज आर देयर, तो हो सकता है that I am proven wrong by Barca tomorrow coming and paying De Jong. Sovik, that's what will happen. Who knows, right? Let's see. ना रोनाल्डो आएगा ना ही लेवेंडोव्स्की आएगा चेल्सी। एग्जैक्टली रॉकी, मुझे भी यही लग रहा है, सच में बोलता हूँ तो यही लग रहा है। जस्ट वायला, ऑलवेज गुड टू हैव चेल्सी अल्ट्रा इन द हाउस। अगेन बिग अप टू यू, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एवरीवन हेल्प्स अ लॉट।
not only to me, to every content creator out there. People don't know that Ten Hag and Ronaldo cannot fit together, because I know Ten Hag's style and I've been following him for a long time. Ronaldo doesn't suit or fit in his style. यार एक chance है, मैं बोलता हूँ कैसे. If Ronaldo can play a Haller role, I know I'm telling Ronaldo playing a Haller role. Ronaldo can play a Haller role, and they can have maybe a Bruno playing as a. मैंने परसों ही बात कर रहे थे, हरमन भैया से बात किया था शायद on दिव्यांश channel. So उसमें यही बात हो रही थी हमारी कि यार basically if you have Bruno Fernandes playing next to Ronaldo, the way that Tadic used to play with Haller, you never know. Ronaldo might not have to move as much. It might be perfect. जो Juventus में to an extent किया गया था just for a short while. I watched that part, but La Liga FFP rules don't favor Barca. You can be sure of that. Okay, Mayuk, I get that as well. Hazard was the best in Chelsea, and that's really, we missed Hazard now in present. I thought Pulisic would fit the shoes of Hazard, but not yet. I really need a player like Hazard who can finish game. But yeah, people who especially follow my FIFA streams, and yes, people, we are back with FIFA 22 as well. Hopefully we'll be back tonight as well. अगर मुझे time मिला बनाने का page, लेकिन definitely we'll get there. But हाँ, वहाँ पर you know it, I have a soft corner for Pulisic for the same reasons. I like people kind of taking on people, and वही मैं disappointed with Hudson Odoi. Much disappointment. अंकित भाई, जॉन टेरी तो बारसा का हिडन फैन निकला. आपने उसका इंस्टाग्राम स्टोरी देखा? नहीं देखा भाई? क्या बोला उसने, बता दीजिए थोड़ा. If Barca is not backing PK in starting 11, then who is going to be a committed, experienced defender will guide? And yeah, exactly, very good point. PK is not fit. Sayan, आज के दिन में PK will still start games in my opinion. I don't think Christensen or Eric Garcia will start. हाँ, if you're getting an upgrade, maybe yes. लेकिन I think जैसे डेस्ट का गेमिंग में बोला ना, एक एक्सपीरियंस सेंटर हाफ जो रहा है बारसा के सिस्टम में इज इंपॉर्टेंट. अराहो हैज हैड वन ग्रेट सीजन. आई डोंट थिंक खाली उसके लिए दे सकते हो उसको, काइंड ऑफ द मेन लीडर. प्लीज शेड्यूल अ सेशन फॉर T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस. ओके, डन बॉस. We will. Kunde also plays as a right back. Yes, Sayan, वही मेरा गेस था that maybe they are getting him as a right back along with Araujo. They might rotate a little bit. वो हो सकता है. I would go for Kunde rather than Frenkie. Exactly, the Barca fans यही सुनने में आया. Well, that is surprised me. Our midfield is shortened, but our defense is the most weakest link and needs to strengthen. लेकिन भाई, how will you manage Eric Garcia and Christensen? ये मेरा question है. How will you manage them? I'm kind of surprised with that. Maybe Xavi has already told PK is not going to play. Okay, this ये आंसर आ गया मेरा already. चलो, thank you. 177 votes, only 79 likes. 100 करवा दो भाई. Come on. लुकाकू वाला थम्स अप दे दीजिए फॉर अ चेंज. और यस, हमने FIFA 22 में लुकाकू को लिया है और रखा भी है. मानव नोज दैट स्टफ. रूडिगर के जाने के बाद डिफेंस में थोड़ा टेंशन तो अरे अमन, आई हियर यू बॉस, वो इंडिस्पेंसेबल था. हाँ, नो प्लेयर इज बिगर देन द क्लब, बट एट द एंड ऑफ द डे रूडिगर आज के में, यार कोई भी बता दीजिए, इन अ 3 द बैक सिस्टम इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल आप देखते हो कोई भी लेफ्ट सेंटर बैक बेटर देन रूडिगर? That's a big question. I don't think so. I don't think so. There's better left center half in a 3 the back system than a Rudiger. तो इसलिए मैं बोल रहा था, Pau Torres kind of comes close. Laporte could do that job. और कौन है भाई वर्ल्ड फुटबॉल में 3 द बैक सिस्टम में लेफ्ट सेंटर बैक में? मुझे याद ही नहीं रहा, ब्लैंक हो गया. Chiellini used to be 2 साल पहले, अभी नहीं. तो अगेन आई डाउट इट. इसलिए मैं बोल रहा हूँ टूकल को चेंज करना ही पड़ेगा सिस्टम अगर इतने डिफेंडर्स नहीं आते. See, KDB and Salah was a Chelsea flop, right? Now they are Premier League legends, so players change. I don't think they were Chelsea flops. Football Peaks. Let me correct you there. हाँ, much respect भाई आपको तो पता है भाई. I love you. लेकिन KDB and Salah were not given chances at Chelsea. Salah wasn't a flop as well. अब देखो कितने appearance किया. He was more of a sub at best. They were not flops. So I think it's just that Chelsea did not see them. KDB in fact did very well. He played the first game of the EPL season that year. It was against Hull City. मैं बोलता हूँ. He had one shot, which was a brilliant shot, a very long strike. Or I think if I'm not wrong, it hit the post as well. ठीक है. तो KDB started that game. तो Mourinho had him in his plans initially. लेकिन वो है because I think he's not playing a cup game or something like that, or he not like his work rate. उसके वजह से थोड़ा सा difference आ गया दोनों में. I don't think skills में problem थी. KDB हमने जब साइन किया था ना, we loaned him back I think to Genk. He was wow. KDB is coming. That was what it was. It wasn't like a surprise कि यार वो Wolfsburg or Werder Bremen और उस सब में अच्छा किया है. I think it was always known that he's a player. हाँ, Man City में इतना अच्छा करेगा वो उतना नहीं मालूम था. I'm not going to say that कि मैं predict करने वाला था यार he'll be the next big thing in world football.
लेकिन साला का वो काइंड ऑफ है यार, अगेन इट वाज मोर लाइक अ साइनिंग बिकॉज हमने खेला था बासिल के साथ एंड देन वी काइंड ऑफ साइन हिम. We didn't have a place for Salah. KDB was more like off pitch issues. So it was like, at the end of the day, दोनों को ही chance नहीं मिला. Depay plays really good in two center forward formation. I've seen him play. हाँ, किसी ने देखा होगा. Thank you Ronaldo. Again, Dutch fans might थोड़ा सा understand. किसी ने देखा है recent Nations League और before that the qualification process जो था. Depay and a Malen together. Depay and a Weghorst together could have worked. ठीक है, could have worked. Weghorst चला गया है. मैं तो बोलता भाई Weghorst भी he could have played a zero role हमारे लिए. Who knows? Even when we had Rudiger, we used to concede goals and lose games. Now Rudiger is not also there. Yeah, इसलिए मैं बोल रहा हूँ change of formation is the best way to go. Go the Lampard way for a change. हाँ, हम concede करने वाले, लेकिन हमें score करना पड़ेगा ज़्यादा, इसलिए go for an experienced attacker. इसलिए मैं बोलते आ रहा हूँ. And yes, just while I say like the stream always helps. Thank you as well. La Liga to change its name from 23 to 24. New name will be announced in August. Wow. Football with comment is breaking news. Great. Thank you, भाई. Okay. क्या लगता है Chelsea next year Tammy Abraham को sign करेगी buyback clause? Next year नहीं करेगी, future में आएंगे वापस, लेकिन next year will be too early in my opinion. I don't think Chalobah is a good centre back. If you look, Rudiger and Christian's performance improved only after playing with Silva, but Chalobah is not. He has improved, sort of. इतना तो harsh नहीं होगा. He is great. I love his attitude. I love that वो थ्रू बॉल्स खेल सकता है. वो बहुत कम चेल्सी डिफेंडर्स खेलते हैं, तो ग्राउंड में थ्रू बॉल्स खेलता है, नॉट एरियली, राइट. बहुत कम खेलते, तो ही इज वन ऑफ देम. ही इज गुड इन द एयर, लेकिन वही है, आई थिंक रीडिंग द गेम में ही नीड्स लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट. पाउ टॉरेस तो कुंडे से भी लेस प्राइस है. आई डोंट नो एग्जैक्टली. मैं थोड़ा सरप्राइज, लेस तो नहीं होगा, करीबन सेम होगा इन माय ओपिनियन. कोवाचिच भाई, आई एम अ कोवाचिच फैन. सबको पता है जो रेगुलरली आते हैं लास्ट ईयर से. एंड यस, पीपल मानव याद दिलाते हैं वापस से. लेट्स लाइक द स्ट्रीम. Yesterday, why Frenkie moved to United is taking so much time. I've explained everything. Yes, fair enough. Thank you. And big up, bhai, sab log. Please support all the new channels. And we are also a new channel in terms of numbers. So support us as well as Football with Comment, absolutely. और हमारे भी दो channels हैं. And yes, please check करिए. बढ़िया वीडियो था यार Football with Comment का. Please check करिए वो भी. कुलीबाली अगर चेल्सी अगर आता है, he is better than Rudiger. Any day advanced stats check कर. भाई better than Rudiger. आकृत, I don't think so. आप कंपेयर कर सकते हो स्टैट्स व्हेन कम्स टू द सेरिया एंड प्रीमियर लीग. हाँ, नॉट सेइंग प्रीमियर लीग इज बेटर, डोंट गेट मी रॉन्ग. मैं खुद सेरिया का भी सपोर्ट करूं, वहां पर है प्रूफ, ठीक है. बट द फैक्ट इज लाइक यू कैन नॉट वीक इन वीक आउट का जो फिजिकल एलिमेंट होता है, प्लस चैंपियंस लीग फुटबॉल में जो चेल्सी ने फेस किया वर्सेस नापोली ने फेस किया, आई डोंट थिंक आप कंपेयर कर सकते हो ना. हाँ, फॉर सेनेगल ही वाज ब्रिलियंट एज वेल, तो आई हैव टू काइंड ऑफ से दैट कुलीबाली इज सुपर्ब. लेकिन इज ही प्रूवन इन द प्रीमियर लीग? नो. Simple fact. I would still go with Koulibaly, and I agree with you overall. He's a very good centre back. But yeah, everyone is saying Rudiger doesn't work in centre back, which Ancelotti prefers. You take Saif. By the way, big shout out, भाई. अपने member है Almighty Blues fan है शायद आप, so Saif. But हाँ, big up, भाई. And yes, people out there, we have a membership in place as well. Definitely means a lot if you can become a member. And if you can super chat, we'll go back to the channel to upgrade in multiple ways. जो अब शुरू कर दिए with FIFA 2022. Having said that, Saif, मेरा यही है ना कि यार देखो, रूडिगर हैज ही बीन टेस्टेड इन टू द बैक सिस्टम रिसेंटली? नहीं. लास्ट टाइम कब टेस्ट हुआ था? अंडर लैम्पार्ड, ठीक है. मे बी जर्मनी में थोड़े बार खेले. आई नो मोस्ट ऑफ द टाइम वो भी खेले थ्री द बैक सिस्टम. बट हाँ, तो दे हैव अ पॉइंट कि ही इज नॉट द बेस्ट. आई एग्री विद हिम. लेकिन जस्ट बिकॉज ही इज अनप्रूवन, आप ये नहीं बोल सकते कि यार घटिया है, ठीक है. आई डोंट बाय दैट, क्योंकि यार रूडिगर जब चेल्सी ने बाय किया था अंडर सारी, वी यूज्ड टू नॉट प्ले थ्री द बैक, ठीक है. आई नो ही वाज इंजर्ड. देन हमने बेसिकली बाई किया था एक्चुअली फ्रॉम रोमा. आई नो वहां पर भी इंजर्ड थे, लेकिन रोमा में कैसे बनाया रूडिगर अपना नाम? रूडिगर ने अपना नाम बनाया भाई प्लेइंग टू द बैक सिस्टम. तो आई डोंट थिंक दैट्स एन इशू. लैम्पार्ड के अंदर मे बी ही वाज मेंटली नॉट राइट, मे बी वो ही वाजंट गिविंग हिज 100%. हाँ, हो सकता है ही इज नॉट गुड, इट्स आर्ग्यूएबल, यू कैन नॉट बी श्योर स्टिल. तो आई थिंक जूरी इज आउट. मैं इतना बोलूंगा, जूरी इज आउट. मैं नहीं बोलूंगा ही इज बेस्ट इन द वर्ल्ड, बट डेफिनेटली टू द बैक सिस्टम में विद रियल मैड्रिड का जो मिडफील्ड है, एनी डे विल फिट यार, एनी डे विल फिट. Barca should be prioritizing signing a right back along with a good centre back. Barca went downhill since Sovic. ये मैं definitely agree करता हूँ that Barca need a right back on priority like right now.
वो चाहिए बारसा को, दैट आई एग्री। आई वाज सरप्राइज्ड कि माज़राओई को दे कुडंट पुल, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड, लेकिन मे बी इट वाज टू अर्ली, तब तक डैनी एल्वेस का फ्यूचर डिसाइडेड नहीं था, बट एस्पिलिक्वेटा से भी थोड़ा सरप्राइज हूँ। हाँ, ही इज अ ग्रेट प्लेयर, ग्रेट लेजेंड, मैं तो चाहता हूँ वो चेल्सी में रहे, but will he start a Champions League final for Barca and win you and have that cross that needs that win? Maybe yes, लेकिन chances are no in a 90-minute game। तो मैं इतना बोल रहा हूँ कि they need one more right back, तो 2 right back चाहिए भाई बारसा को। I agree with you 100%। You're correct, I'm not comparing Serie A and Premiership, but I have a point, Rudiger also have much better than, but a better team than Napoli। Okay, fair enough, yeah। रूडिगर के पास कांटे है, आंकित हैज अ ग्रेट पॉइंट, एब्सोल्युटली मैं डिसएग्री नहीं करना चाहूंगा। हाँ, नापोली के पास भी अच्छे प्लेयर है, बट या चेल्सी मिडफील्ड, कम ऑन, इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड ऑन पेपर एटलीस्ट। आई एग्री विद दैट आंकित 100%। तो मैं लेकिन वही बोलूंगा ना यार, वही आप प्रीमियरशिप में देखते हो वीक इन वीक आउट वर्सेस सीरिया देखते हो वीक इन वीक आउट, मैं वो कंपेयर कर रहा हूँ सिंपली पुट, राइट। लेकिन कोई नहीं। वेल, टीरेक्स इज हियर, अद्वित्य in the house, okay, thank you। Now I'm seeing a lot of Chelsea toxic fans hating Barca on Twitter, Instagram, saying bankrupt, etc. What to expect from toxic fans? Again, यार, people who might watch this video from the start and Ronaldo आप तो रहे हो, I hope I'm not coming across as toxic, because yes, I might come across as salty आज, लेकिन यार वही है यार, it's about numbers at the end of the day। तो थोड़ा सा बेसिकली क्वेश्चन मार्क है, it's a question mark in my head कि भाई how is it possible। तो इसलिए मैं बोलता हूँ अभी भी यार डियोंग might just come out of Barca, मैं अभी भी बोलता हूँ there are high chances। इधर मिलिटाओ तो साइन कर सकती है चेल्सी, बीच में रिपोर्ट्स आई थी, लेकिन यार रूडिगर क्यों साइन किए रियल मैड्रिड? हाँ, टू अपग्रेड द सेंटर हाफ, बट एट द सेम टाइम रियल मैड्रिड की प्रॉब्लम क्या थी? आफ्टर द फर्स्ट 11 दे डिडंट हैव अ ग्रेट स्क्वाड, जस्ट लाइक लिवरपूल हैड 2 years ago प्रॉब्लम ना। लिवरपूल ने एड्रेस कर दिया है 2 साल पहले, और इस सीजन में कर दिया है एड्रेस रियल मैड्रिड ने। तो आई डोंट थिंक दे लेट, आई नो मेंडी फॉर सेल बोल रहे हैं, बट आई रियली डाउट यार, आई रियली डाउट। नाचो एज मच एज वो एक्सपीरियंस है, किया है, काफी अंडररेटेड है, आई डोंट थिंक वो नेचुरल लेफ्ट बैक है, राइट। बट हाँ, सेंटर बैक भी चाहिए बस, मिलिटाओ। नाचो इज नॉट अ रिलायबल वीक इन वीक आउट सेंटर बैक। अगर बाय चांस, टचवुड फॉर रियल मैड्रिड फैंस, बाय चांस इंजरी हो जाती है किसी सेंटर हाफ को, भाई मिलिटाओ इज बीन ग्रेट एज वेल फॉर देम। बारसा नीड अ लेफ्ट बैक rather than a right back, I suppose, because Garcia can play as right back, वो ऑलरेडी खेल चुका है फॉर सिटी। ओके यार, दैट्स अ गुड पॉइंट। मैंने बात किया था मैड्रिड पंडित को, यस, शाउट आउट टू मैड्रिड पंडित एज वेल। लाइक फॉर कुकी, सिटी हब ऑलवेज नाइस भाई, आपका ढंग बढ़िया लगता है भाई लाइक पूछने का, लेकिन हाँ लाइक कर दीजिए डेफिनेटली, और एक कुकी ले लीजिए मेरे तरफ से, कुकी खा लीजिए डेफिनेटली। फ्रैंक कैसीज इन एडिशन टू बारसा मिडफील्ड, अरे डेड स्काई गेमिंग, आपके नाम से और फ्रैंक किसी के नाम से मुझे याद आ गया मानव का कमेंट भी, क्योंकि मानव का कमेंट नीचे है, और यार भाई हमें फीफा में करना है फ्रैंक किसी को साइन, याद है मुझे। लेकिन फ्रैंक कैसी इज इन एडिशन टू बारसा मिडफील्ड, डज दैट मीन दैट द पोजीशन इज अ थ्रेट फॉर द प्लेयर्स, देयरफोर देयर टू कॉन्सिक्वेंसेस, प्ले देयर बेस्ट टू सिक्योर द पोजीशन और ऑपोजिट? ओह वाओ, इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक मैं बोलूंगा, देखो फ्रैंक कैसी, अगेन बीइंग एन एसी मिलान फैन एज वेल, मैं देखा हूं काफी, हिज इंप्रूवमेंट इज प्रोबब्ली सेकंड टू नन। मैं बोलूंगा जो स्केल ऑफ इंप्रूवमेंट है ना, टू फॉर मे बी राफेल लियाओ, उतना इंप्रूव किया एक साल में फ्रैंक कैसी ने, तो काफी इंप्रूवमेंट है। अब देखना पड़ेगा हाउ विल ही काइंड ऑफ कंटिन्यू दैट इंप्रूवमेंट अंडर जावी। आप बोलोगे अंडर जावी तो डेफिनेटली इट विल बी लाइक फिश टू वाटर, लेकिन ही इज मूविंग टू स्पेन, तो टाइम विल टेल। अभी भी मुझे लगता है, आई माइट बी रॉन्ग, पीपल आउट देयर बारसा फैंस स्पेशली, आप बोलिए, बट आई थिंक फ्रैंक कैसी इनिशियली अगर डियोंग रहते हैं, ही माइट रोटेट, आई डोंट नो, आई एम जस्ट पुटिंग इट आउट देयर, क्योंकि आई कैन सी गावी और पेड्री में से एक जन मिडफील्ड में खेलते हुए, बिकॉज लाइक आपने रफीना को साइन कर लिया भाई, कैसे फिट कर सकते इतने सारे प्लेयर्स, तो मुझे लगता है गावी और पेड्री में से एक जन मिडफील्ड में खेलेगा, डियोंग खेलेंगे एंड सर्जियो बुस्केट्स खेलेंगे। लेकिन अगर डियोंग जो निकलने वाले हैं लग रहा है मुझे, then Frank Kessie will start, because that's the best midfielder right now. I don't think Nico will fit the bill. Please discuss about PSG before ending the stream. Vitinha, Galtier, Campos in the backs, Kamaka, Sanchez, Skriniar very close. I feel they're going solid. Oh yes, यार PSG again, PSG fans अगर है तो यार आप भी बोलिए भाई, how do you feel about things going? भाई it's a new era, और कल ही हमने बात किया था जी भाई के साथ, talk with us about how Galtier is going to affect Messi and co. Can it basically be a blessing in disguise for the superstars having such a player, but such a manager? देखो यार, the fact is that a lot of signing जो अभी करने वाले हैं ना PSG और कर रहे हैं, I don't think यार it is the fact कि ये सब लोग expect कर रहे हैं to start। आप carefully देखो, रेनाटो सैंचेज है, विटिनिया है। रेनाटो सैंचेज एक ऐसा बंदा है जो बेसिकली
आज के दिन में इन अ सीजन कितने मैचेस खेलता है? मैक्सिमम 30 इन अ 60 मैच सीजन इन ऑल कॉम्पिटिशंस ही प्लेज ओनली 50% ऑफ द टाइम्स. ठीक है, तो दैट इज देयर. Then you have a Vitinha. I don't think Vitinha is expecting to start every game. You know it as a matter of fact. ठीक है, स्कमाका इज अ यंग स्ट्राइकर जो वर्ल्ड कप नहीं जा रहा. याद रखो, इटली इज नॉट गोइंग टू वर्ल्ड कप. तो स्कमाका इज दैट. तो ऐसा नहीं कि स्कमाका को खेलना है हर गेम. ठीक है, स्क्रीनियर भी आई थिंक दे मिस्ड आउट ऑन वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन जस्ट. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यार दे विल नॉट जॉइन. तो दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस ऑलरेडी, बट आई थिंक दीज विल बी अपग्रेड टू द स्क्वाड ब्रिलियंटली बिकॉज आप देखो सभी आर प्लेयर्स who are able to kind of work some work. Even Skamaka up front, he's the guy who actually works. तो Skamaka है, Sanchez है, Skriniar है, Vitinha है और all the. लेकिन having said that, मुझे नहीं लगता सब players मिलने वाले हैं. Sanchez as an AC Milan supporter, I'm saying यार AC Milan ले लेगी Sanchez को. I have a feeling Kessie का replacement will be brilliant Sanchez. हाँ, apart from that, they're doing a madness. क्योंकि what they are doing is they'll be keeping obviously Neymar. वो बोला है Galtier ने. Let's go with that for now. तो नेमार, एम्बापे और मेसी को अनलीश करेंगे विद वेराटी बिहाइंड देम. वो रहेगा उनका स्ट्रेटजी. हाँ, ही हैज काइंड ऑफ बीन वेरी रिजिड एट टाइम्स. आप बोल सकते हो द गैल्टियर इन लीगा एंड ही इज काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट एज वेल ऑफ द फील्ड. लेकिन आई थिंक वही है, ही नीड्स मोर ऑफ अ स्क्वाड हु इज एबल टू काइंड ऑफ लिसन टू हिम. और वो तीन प्लेयर्स तो भाई अनलीश देम. दैट्स व्हाट आई वुड से. सो आई थिंक ओवरऑल दे आर प्रीटी सॉलिड. मैं बोलूंगा पीएसजी, अनलाइक पॉपुलर ओपिनियन, मैं तो बोलूंगा भाई पीएसजी बच के रहना सब लोग. बिकॉज आई एम सेइंग इट दिस ईयर. मुझे एज अ चेल्सी फैन आई कैन रिलेट टू इट बिकॉज इट्स बेसिकली पीएसजी आर गोइंग थ्रू इन अ स्ट्रेंज सेंस. हाँ, हम लोग की काफी हिस्ट्री पहले भी थी, नो पार्ट इंटेंडेड. लेकिन 2003 से लेकर 2011 तक जो पीरियड था ना, वो पीरियड अभी पीएसजी का चल रहा है. तो आई वुड स्टिल से जो मैन सिटी का हो गया है 2012 से लेकर 2008 से लेकर 2015 तक. तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट पीएसजी का चल रहा है. तो देयर विल बी कम अ टाइम दैट वो जीतेंगे यार खुद. एंड मे बी गाल्टियर माइट बी द गाय हु माइट एबल टू डू दैट. क्योंकि यार दे नीड अ प्रॉपर यंग स्क्वाड टू काइंड ऑफ बीइंग माइक्रो मैनेज. लेकिन वो तीन जो धुरंधर लोग हैं, let them kind of just go for it. No offense is it true that Chelsea were collecting funds for surviving in early 90s? Arey, we got bought for £1 here. Yeah, it's true. It is true. Definitely it's true. No two ways about it. Or the fact यार people don't, इसलिए मैं बोल रहा हूँ it's about our history. People don't know हमारा जो cup wins थे, the League Cup win, the FA Cup win, the Cup Winners' Cup, the Super Cup between 97 and 2000. Those were financially also very important. और those were also important because उसी दौरान basically उसके पहले जस्ट रूड हुलिट आए थे. रूड हुलिट मेड श्योर दैट जियान फ्रांको जोला है, मार्क ह्यूज को we could attract. A lot of players came during the mid to late 90s, and then finally हमें थोड़ा सा stability आया. We could win things, we could get some money, we could kind of get a buyer. Eventually, जो obviously the difference was in 2002-2003 season. वहाँ पर definitely बहुत एक मैच ने बदल गया, you can say, but again it was the entire season. हम fourth आए थे and then Roman Abramovich bought us. So I think mid 90s तक we were actually precarious situation. Definitely I have a feeling that both Bernardo and Gundo might go next summer. Next summer I agree. This summer I don't agree. I think both will stay city up. Eric is average. Okay, fair enough. Eric Garcia is average. Yeah. यार AC Milan ले रही है ना. Don't tell me Barcelona are going to hijack that. AC Milan भाई, AC Milan. I think PK is going to start with Araujo, Kunde, if we get him, and Alba. Okay, we start with the back four and then go back to 3 during transition and Alba. हाँ, ये मयूक मैंने काफी बात किया सादिक भाई से भी इसके बारे में, and I agree with him. 100% मैंने देखा है, हमने वॉच अलॉन्ग्स में भी कवर किया था पिछले, it was the latter part of the season especially. लेकिन यार Jules Koundé, is he expecting to be in the France squad as a right back? ये मेरा क्वेश्चन है. Is he expecting to be in the World Cup squad? Probably yes. Maybe he loses spot to Kurt Zouma, despite Kurt Zouma के जो off-field issues है. I'm just saying it out there. To let me know on that, because he wants to be a centre back is what I understand. Let's get Marco Marin back. ये comment of the day, रोज एक comment of the day होता है, ठीक है? तो ये आज का comment of the day होता है अभिषेक को. भाई अभिषेक, आपको तो भाई ये this comment man, wow, ये है Nice. बढ़िया लगा भाई अभिषेक, बढ़िया लगा. You got a smile on my face. Thank you for that.
Vitinha and Sanchez are a different upgrade to Danilo Pereira and Idrissa Gueye. One of them could start regularly. What Manav? What about Herrera, the Manchester United legend? I call him legend because the guy loves Manchester United literally. Yeah. तो मतलब no pun intended. I genuinely like the player as well. हरेरा भाई मानव क्या लगता है भाई उससे याद है भाई हरेरा फीफा में रात को ट्राई करेंगे यार मुझे याद है हरेरा इज नॉट एन ऑप्शन बैड ऑप्शन याद दिलाना भाई अगर वो वी विल डू दैट सर्च पीएसजी फैंस अरे आखिर कम ऑन भाई ये सच नहीं है सिटी एंड पीएसजी आर स्टिल बिल्डिंग देयर हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न डे नो वरीज अबाउट इट आई हैव नथिंग अगेंस्ट इट इफ पीएसजी वांट टू सक्सेस देन प्ले एज अ टीम एंड नो ईगोज इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना दे आर बिल्डिंग आप देखो मानव ने जो कमेंट किया ना इन टर्म्स ऑफ द प्लेयर्स दे आर गेटिंग प्लेयर जो दे विल नॉट बी एक्सपेक्टिंग टू प्ले ईच एंड एवरी गेम जो वर्ल्ड कप नहीं जा रहे दोस काइंड ऑफ प्लेयर्स तो काफी सारा काइंड ऑफ कनेक्शन है हु कैन बी मैनेज वेल विदाउट ईगोज एंड दोस फ्रंट थ्री यार वो तो है डेफिनेटली समथिंग अरे विशेष लव फ्रॉम नेपाल बोल रहे लव फ्रॉम इंडिया एज वेल एब्सोल्युटली भाई एंड दिस फॉर एवरीवन आउट देयर अगेन पीपल बिग रिक्वेस्ट do check out our shorter videos as well. We do a lot of hard work there. Not just hard work, we try to bring it on time. और थोड़ा entertainment भी factor होता है. तो यार give me a chance. My thing is not only give me a chance, give all the newer content creators also a chance. And I love all the community. You know that very well. But it's nothing against anyone. It's just about me. And of course the newer content creators give us a chance. And please check out our videos as well. हाँ आप देखकर अच्छा नहीं लगा तो give us feedback. We would love to kind of improve on that absolutely. Oh yes, we are working on the channel as well, just so you know everyone out there. So that's why I'm saying that we are monetized on both the channels. So आपको अगर contribute करना है, any contribution will go on to upgrading the standard of the channel, the resources of the channel. तो वो सब चल रहा है already. FIFA 22 we have started for people out there. और I have improved in the gameplay as well. मैं professional खेल रहा हूँ, just so you know. If Chelsea fail to sign Jules Koundé, Dead Sky Gaming pusher, then who will be the second favorite to fill the position of Aspi? Who could cover both right back and center back? Oh, bhai sahab. You know what? Chalobah ने किया है. He has definitely done it in the past. He can do that job. लेकिन would I want him to do that job? Not really. Dujon Sterling, he is someone who can play at right center back in the 3 at the back system in the right wing back. हाँ, you would say Aspi को कैसे compare कर सकते हो? भाई Blackpool में थे. Dujon Sterling did not so bad. Last year pre-season also he did very well. I know it's just pre-season, लेकिन मेरे ख्याल से I was kind of surprised that Dujon Sterling wasn't kept and Chalobah was kept. हाँ, both had good pre-seasons, लेकिन मुझे लग रहा था Dujon Sterling रहेंगे because Livramento हमने भेज दिया था, remember? तो but हाँ, he can be that player as well. So we have two options. One player जो एक proper center back है, जो right back खेल सकता है in Chalobah, and one player in Dujon Sterling who's a proper right back who can also play center back, and he has a physicality, but not at that Aspi level, at least for now. But I don't think we are linked with many players either, apart from Jules Koundé, Kimpembe. We have Koulibaly, maybe Webster से लिंक हुए थे थोड़ा बहुत, and Kilman से लिंक हुए थे थोड़ा बहुत, and और Guardiola से लिंक हुए थे थोड़ा बहुत. I don't think we have linked with many right-sided centre halves because Jules Koundé में इतना invested थे ना. That's the thing. बाकली अभी तक चेल्सी में है. यस भाई, मेरे फीफा में भी चेल्सी में ही है. उसने एक्सेप्ट नहीं किया है, याद है तो आपको कल रात का. लेकिन बिटवीन केपा, बाकली, सार, बाचुआई, चेल्सी स्पेंडिंग 50. ओ भाई साहब, मैं क्या ही तो बोलूं भाई, क्या ही बोलूं. That's true. लेकिन यार केपा, I know काफी एक्सपेंसिव है. The guy is really raised his standards by last season. अंग्रेज वर्ल्ड कप बगल में है तो ओके. एशिया में वेल डेफिनेटली भाई, एशिया में 20 साल बाद आएगा. देखते हैं. होपफुली यार, मैं वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई स्टार्टेड फॉलोइंग फुटबॉल मच मोर इज बिकॉज ऑफ द 2002 एशिया में जो वर्ल्ड कप हुआ था साउथ कोरिया जापान में. तो दैट इज समथिंग जो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट था एज अ फैन. तो इट गॉट मी टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ फॉलोइंग प्लेयर्स मोर क्लोजली, क्योंकि ज्यादा कवरेज थी, ज्यादा हाइप था, ज्यादा मीडिया काइंड ऑफ कवरेज था जनरली, राइट. लेकिन हाँ, मैं तो बोलता हूँ भाई वर्ल्ड कप डेफिनेटली आएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे इट डजंट मैटर कहाँ पर है, इंडिया क्वालिफाई होनी चाहिए. मैं बोलता हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. हरेरा इज ऑन सेल फॉर पीएसजी. वैसे हरेरा इज ऑन सेल ऑन पीएसजी रियल में भी. हरेरा एंड ड्रैक्सलर आउट ऑफ द डेप्थ, दे आर गुड बट नॉट द स्टार्टिंग मटेरियल यू नीड टू विन द चैंपियंस लीग. या हरेरा के पास एटीट्यूड है, बट या आई एग्री इन टर्म्स ऑफ स्किल्स एंड इन टर्म्स ऑफ पेस ही इज नॉट देयर. हाँ, देयर वर टाइम्स व्हेन वो मार्क करता था ईडन हजार्ड को, मुझे याद है भाई. जीनी वाइल्डम, या
I think maybe this is the season for him because it's a World Cup year. Who knows, right? Hello to 8744 people. Yes, do check him out as well. Good channel, absolutely. Barca fan in the house. And 80, do check out my so-called rant or so-called reaction. आप बोलोगे मैं salty हूँ, लेकिन I thought I threw a lot of facts with a lot of question marks as well in the beginning part of the stream. So do check it out, of course. But nothing against any Barca fan and nothing against Barcelona. Big up, absolutely to 80 as well. Squiz, who was the number 10 before Mata? Who was the number 10 before Mata? Pusho in Chelsea. In Chelsea, wasn't it Joe Cole? Joe Cole ही होंगे ना? हाँ, Joe Cole ही होंगे यार. नहीं? Correct me if I'm wrong. Joe Cole ही होना चाहिए. Joe Cole definitely, yeah. Joe Cole, Chelsea legend. If you don't get Kunde or Koulibaly, who do you think you should go for? I read somewhere not credible enough that we are considering. Oh, bhai sahab, nahi. Mayuk, I don't think so, man. I hope not. I hope यार proper scouting हुई है. But again, I don't care अगर अच्छी scouting हुई है. Tuchel wants get him. लेकिन would they start in the Premier League? I have my doubts. Hare round sale, yeah. Thank you again. Kepa bought for a higher price is not his mistake. His standards are raising. Just hope for the good season for him again. Well, best would be for him to go. To be very honest about it, this guy gaming. But again, आप देखे रहे मेंडी का फॉर्म नीचे गिरा था थोड़ा. तो who knows that there is a opening there. अगर हम नहीं get rid कर पाए, तो I think it's more than welcome. Absolutely welcome है Chelsea में. Since Burnley got relegated, Weghorst signed for Besiktas. Why did Chelsea? Exactly. आदित्य मैंने कुछ ही मिनट पहले बोला था. Weghorst could have been one that who could have been signed. लेकिन कुछ नहीं, कोई नहीं. और यस, टॉकिंग अबाउट वेगॉर्स, भाई अर्मांडो ब्रोहा 30 मिलियन प्राइस टैग आया है. मैंने तो बताया भाई अगर वेस्ट हैम ले रही है तो भाई आप डेक्लन राइस को दे दो, 70 में दे दो, चाहे 100 पूछ रहे हो 70 में दे दो, आप ब्रोहा का ले लो. मैं तो तैयार हूँ आज, क्योंकि यार आज के दिन में मुझे चाहिए एक अपग्रेड इन अ प्रॉपर डीएम. हाँ, डियोंग मैं डेफिनेटली लूंगा, लेकिन स्पेंडिंग 85 मिलियन यूरोज फॉर अ डियोंग वर्सेस स्पेंडिंग 70 मिलियन पाउंड ऑन द राइस, I think I'd still go with Rice 70 million because of what Chelsea needs. क्योंकि हमें चाहिए 4-3-3 का शिफ्ट जो डियोंग might not be able to get us to. राइस वो ऑप्शन देता है. राइस कैन आल्सो प्ले इन अ डबल पिवट, वो भी उसका प्लस पॉइंट है, लाइक हम इंग्लैंड में देखते हैं. तो मैं राइस के लिए जाऊंगा कंपेयर टू डियोंग. हाँ, नॉट कंपेयरिंग द प्लेयर्स, जस्ट फिटमेंट फॉर चेल्सी एट दिस पॉइंट इन टाइम एंड द कॉस्ट ऑफ कोर्स. नो डज बेनायून. अरे बेनायून को नंबर 10 मिला था क्या चेल्सी में यार? मैं भूल रहा हूँ. आई एम प्रीटी श्योर ये मुझे याद होगा यार. ओ भाई साहब, गुड वन, गुड वन, गुड वन. Oh, I was talking about Barca. Okay, fair enough. Yes, people, let's get in the likes. Let's get in the likes. Absolutely helps. And of course, do not forget to subscribe to both our channels. और आज रात हम लाइव होंगे भाई. सब लोग बता दीजिए कहाँ पर, ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस पर लाइव हो कि ऑलमाइटी ब्लूज एफसी पर लाइव हो. ऑलमाइटी ब्लूज एफसी व्यूअर्स, आई एम आस्किंग यू, वर यू ऑफेंडेड द फैक्ट दैट कि मैं FIFA 22 की और स्ट्रीम कल रात को? लेट मी नो. और अगेन एवरी डे इज अ न्यू डे. लेट मी नो कहाँ हम स्ट्रीम करेंगे. होपफुली हम आएंगे, थोड़ा लेट आएंगे आज, लेकिन आएंगे. क्या बोलते हो? एंड यस, हु एम आई में भी कौन चाहिए नेक्स्ट बता दीजिए. आई बीन ट्राइंग टू रीच आउट टू कपल ऑफ पीपल, लेकिन वो ये दो जन साथ में अवेलेबल होना काफी मुश्किल होता है. मैं तो तैयार हूँ भाई, तो वो भी बता दीजिए. एंड अ लॉट मोर. यस, वर्ल्ड कप का सीरीज मैं प्रॉमिस करते आ रहा हूँ. दैट इज समथिंग दैट इज पेंडिंग. लेकिन वो ये ट्रांसफर्स की इतने ज्यादा स्टोरीज हो रही है ना, एवरी सेकंड डे आई एम डूइंग ट्रांसफर स्ट्रीम्स. एंड ऑफ कोर्स हम फीफा में भी इन्वेस्ट कर दिए, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, एंड नॉट जस्ट द वर्ल्ड कप. वर्ल्ड कप पर भी आएंगे यार, अभी तो टाइम है. वी विल सर्टनली कवर एवरीथिंग जो भी मेरा ज्ञान है फॉर सो मेनी वर्ल्ड कप्स. 94 वर्ल्ड कप से देख रहा हूं, तो मतलब आई होप आई कैन शेयर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. लेट्स सी. If Chelsea sell Broha, they should include buyback clause. Oh, 100%, 100%. Just like Leno, which isn't bad. Choose Fulham to be in starting 11. Okay. Burn Leno, yeah. He chose, to be in the starting 11. Kepa could do the same probably. भाई लाजियो सारी के साथ, लाजियो के कीपर के साथ हम भी लिंक थे ना, तो सारी के साथ भाई reunion. Who knows? After that, what happened against Man City in the Carabao Cup final? Imagine. Nico Gonzalez doesn't click in CDM position. Who's going to substitute Busquets in future? I heard Barca are going for Palmeiras CDM Danilo. Interesting. Palmeiras भाई हमने खेला था Palmeiras के साथ में, सबको याद है. Well, they have a decent midfield. They have very good midfield थे उनकी. मैं ऐसा नहीं बोलूंगा मैं Palmeiras को week in week out देखता हूँ. लेकिन अगेन बारसा यार, बारसा की स्काउटिंग सिस्टम वी ऑल नो. आई स्टिल फील यू माइट हैव समवन इन द एकेडमी हु माइट यू आप सिर्फ प्रमोट करोगे. दैट्स माय ओपिनियन. क्योंकि यार मुझे नहीं लगता anyone can replace Busquets. So you rather take your time and build that player or play double pivot until then. Busquets इस सीजन तो खेलेगा भाई, टेंशन नहीं लेगा. Okay, West Ham, Newcastle has the most chance for Broha. Okay, thank you for sharing. Yeah, Newcastle definitely has as well. लेकिन Newcastle के लिए भाई
Would he start? Would he start? No, I don't think so. So I'm surprised. That's why मैं West Ham बोल रहा हूँ. हाँ, even for West Ham he won't start. लेकिन West Ham के लिए Antonio is far more. हाँ, Newcastle का striker भी I think काफी injury prone है. You can say that. But I think still I'm saying like Newcastle, they might go for a bigger name in my opinion. I might be wrong. Let's see. Do you think in football transfer money mentioned on contract is less money than actually paid to not violate fair use of money? Quite possible, Anish, especially after financial fair play. Who knows? Retro FIFA tonight बोल रहे हैं मानव. Okay, retro FIFA करते हैं. Then retro FIFA but without the arrows. क्या बोलोगी? वहाँ लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया यार कभी भी. मैंने ट्राई नहीं किया. You know what? I might just do FIFA 22 वहाँ पर and let's see the response, मानव. Let's continue कल रात का. We'll come back to retro FIFA. How do you think that is? एक prediction who will be the flop signing of the season for me? I think it's Darwin Núñez. अरे भाई बेचारा injured हो गया है. Hopefully he gets well soon. I don't think I'll even judge Darwin Núñez this season. मैं सच में जज नहीं करूंगा. हाँ, ग्रीलिश आप बोल सकते हो लास्ट सीजन जज करने के लायक था, बट एट द सेम टाइम आप ये भी बोलोगे ना दैट वो एक क्लॉज था कि यार यू हैड टू बेसिकली पे दैट and you had so many attackers, so you wasn't given the chances. Darwin Núñez का वही है, they have a lot of attackers. They have Bobby Firmino जो hardly खेले थे last season. So I think Darwin Núñez will play, but Champions League football definitely वो खेलेंगे and a lot of other football. लेकिन I don't think he'll be a starter in Premier League starting the as in what do you say the league. I don't think वो होगा. तो can you judge on that basis? I don't think so. थोड़ा सा unfair होगा. लेकिन हाँ, we'll talk again in December, maybe busy period में, maybe things might come out. Football Creeks ये tweet or rather comment याद दिलाएंगे मुझे. Who knows? मैंने मैसेज किया है. Let's see. Hopefully we will get them. But again, और भी कोई नाम हो तो बता दीजिए. Thank you, AD man. Always much love to you and everyone watching, especially the members and mods. They help me out as well, but everyone watching as well. I cannot kind of count out anyone. Barca scouting system is unique and mainly go for secondary. Yeah, exactly. They go for basically the youngish people, or that is brilliant. Okay, आज सैफ मैंने यही कमेंट किया. आप 2 बार कमेंट इसके बारे में मैं बताया स्ट्रीम में, लेकिन अगेन मेंबर इन हाउस आस्किंग, तो मैं क्विकली बताता हूँ कि भाई अभी भी यार पिक्चर अभी बाकी है. मैं बोलता हूँ सैफ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. क्यों? क्योंकि यार उन्होंने ये नहीं बोला है कि रोनाल्डो वांट्स टू स्टे. और टुकल ऑन द अदर हैंड, जो मैंने 2 बार दिखाया वीडियो क्विकली, इन यूएस इन प्री सीजन एक रैंडम फैन ने पूछा है भाई इज रोनाल्डो साइनिंग फॉर चेल्सी और आर यू साइनिंग रोनाल्डो? आई वोंट टेल यू. उन्होंने बोला है. He didn't say I don't speak about other teams players etc जो normally बोलते हैं. Just saying. Thomas Tuchel and Chelsea would jump at the glance to sign Robert Lewandowski should Barcelona not be able to pull off a deal. Yeah, absolutely. जाना भी चाहिए, but agreement 2 साइड से होती है, वही प्रॉब्लम आ जाएगी. Will Lewandowski come to Chelsea? Maybe Tuchel can help here. The German element वो थोड़ा सा हेल्प होगा because playing in Germany both of them have been there, right? हाँ, लूकस पकेटा का यार वेरी वेरी गुड पॉइंट यहाँ पर. भाई आर्सेनल फैंस आर वांटिंग लूकस पकेटा. ऑल ऑफ अ सडन दे वांट लूकस पकेटा ओवर अ टीलेमंस. मैं एग्री करता हूं उनसे. मैं एग्री करता हूं बिकॉज टीलेमंस इज नीदर अ डीएम, प्रॉपर डीएम नहीं है, और ही इज नॉट समवन हु बेसिकली इज रिलायंट ऑन स्कोरिंग गोल्स. लूकस पकेटा इज मोर ऑफ अ क्रिएटर इन माय ओपिनियन. ठीक है, तो लूकस पकेटा कैन फिट इन, स्पेशली द फैक्ट यार उनके पास है 2 यंग स्ट्राइकर्स. हाँ, गैब्रियल जेसुस आप नहीं बोलोगे ही इज द यंग एलिमेंट ऑफ व्हाट ही वाज 5 years बैक, लेकिन यू नो व्हाट आई मीन, राइट? ही इज नॉट योर प्योर नंबर 9. तो लूकस पकेटा एंड गैब्रियल जेसुस माइट फिट. दैट माइट बी द वन. लूकस पकेटा जस्ट बिहाइंड गैब्रियल जेसुस, आई मीन, राइट? तो देखते हैं भाई, देखते हैं क्या होता है. ब्राजील के लिए भी काफी इंटरेस्टिंग होगा. अगेन कमिंग बैक टू ब्राजील, राफिनिया जा रहे हैं बार्सिलोना. ब्रिलियंट फॉर बार्सिलोना, ब्रिलियंट फॉर हिम. अभी भी मैं बोलता हूँ इफ ही इज नॉट स्टार्टिंग गेम्स फॉर बार्सिलोना देयर माइट बी अ केस कि भाई वो ब्राजील के लिए नहीं शुरू करें. देयर माइट बी अ केस बिकॉज़ एंटनी, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, व्हाट डू यू फील अबाउट एंटनी एंड लिसांड्रो? आज बात नहीं किया उसके बारे में. 120 मिलियन एज पर रिपोर्ट्स भाई दोनों का मिलाकर मांग रहे. और एरिक टेन हाग ने ये भी बोला है भाई वी आर गोइंग टू बी अपग्रेडिंग इन अटैक एज वेल एज मिडफील्ड. तो लग रहा है इट इज काइंड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स एंटनी. तो एंटनी तो आ जाएंगे, बट will they be able to pay 120 million or will they pay 120 million euros for Anthony and Lisandro Martinez? मेरे ख्याल से 100 million euros में हो जाएगी डील. That's what I really feel. Name best goal you ever witnessed which was scored against us. Mine will be oh wow, brilliant man. Pape Cisse has to be the. I agree. Pape Cisse has to be the one.
यार मैं बोलूंगा अगेन थोड़ा रोमांटिक हूँ, मैंने बोला है काफी बार स्ट्रीम्स में, रोनाल्डिनियो ने मारा था इन अ लॉस, यस वी बीट बार्सिलोना, वी एलिमिनेटेड देम इन द राउंड ऑफ 16 इन 2004 2005 टेक्निकली, और रोनाल्डिनियो ने मारा था वो गोल और पूरा स्टैमफोर्ड ब्रिज वाज लाइक ओ माय गॉड रियली, दैट इज व्हाट मैं बोलूंगा, दैट इज द गोल। इफ क्लॉप वाज सिलेक्टेड समवन ही विल डेफिनेटली बी गुड। सौविक आई एग्री, मैंने कल ही बात किया था जी भाई एंड आई थिंक मानस से, that I think the difference is Klopp. I agree absolutely. No problem, sir. Bhai, always welcome everyone, and this goes for everyone as well. Like कर दीजिए स्ट्रीम, भूलना मत। और आज रात यार लगता है at this rate I'll start at midnight, लेकिन we'll do some FIFA for sure. Liverpool signing rarely go flop, just that Darwin shouldn't be that rare player. Okay, fair enough. And yes, I agree. जैसे हमने किया था recently stream, the worst 11 which was signed by Klopp and Pep, hardly there were people who were really flops. Okay, Danilo is good. Yes, thank you for sharing that. Newcastle won't go for a big name striker because they are looking at one of Diaby or Paqueta. Ah, by the way, यार आज Chelsea are also linked to Diaby and Coman. हाँ, not reliable sources. लेकिन what do you think about that? Diaby, Busa Diaby and what about Coman? Kingsley Coman being that winger, अगर हम मिस कर रहे हैं, do you think Bayern अगर गनाबरी रखती है, अगर लेवेंडोस्की रखती है, will they basically और टॉकिंग अबाउट बायर्न छोटा सा आया था, लेकिन फेब्रिशियो ने वो मजे किरकिरा कर दिया। और क्यों किया है? हैरी केन टू बायर्न म्यूनिख आया था भाई आज दिन में, हैरी केन टू बायर्न म्यूनिख, लेकिन फेब्रिशियो ने नकार दिया है, नहीं हैरी केन इज नॉट फॉर सेल, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। मतलब अगेन इनवाइट तो डेफिनेटली जाएगा भाई मानव, आपको पता ही है, बट अगेन अगर वो लोग नहीं आ पाएंगे फॉर वट एवर रीजन, बिकॉज यार टाइम्स काफी मैच नहीं करती समटाइम्स, but certainly we'll try and do it. Yeah, we'll try and do it. Not just them, I've already invited them. In fact, I've already invited Michael as well, a couple of others, Guruji as well. Definitely यार काफी लोग हैं, मतलब I'm just kind of naming a few, but काफी लोग को invite करेंगे। We'll try and मानस से भी बात हुई है यार, हमने करना है proper। Lewandowski now open for a move, I think he wants to buy an, oh interesting, let's see Rafael Leao Milan की left wing, one of the best left wings in Europe, wow, they have to keep Rafael Leao। चेल्सी फैंस वांट राफेल लियाओ, लेकिन मैं बोलता हूँ भाई नहीं आने वाला वो। नो आई डोंट थिंक सो ही इज मोर ऑफ ओके, आई डोंट थिंक आई शुड कंपेयर बिकॉज ही इज आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन यार मेसन ग्रीनवुड से आप कंपेयर करना चाहोगे? नहीं, आई थिंक ही इज नॉट अ नेचुरल फिनिशर एज कंपेयर्ड टू मेसन ग्रीनवुड इवन, तो ऑनरी तो दूर की बात है, आई थिंक ही विल रिमेन अ विंगर इन माय ओपिनियन, बट हाँ, ही इज बेटर देन जिएश इन व्हाट ही इज टुडे, होपफुली ही कंटिन्यूज दैट। Sergio Aguero curler after missing a oh wow, that's a brilliant goal as well, brilliant. Oh, let's see why Rocky, I hope I'm proven wrong and you're proven right. Chelsea should go, yeah, Diaby has been linked for a reason, let's see। चलो यार मिलते हैं, and everyone, yes, do not forget to like, share, subscribe, and do not forget to hit that bell notification icon also on Almighty Sports Plus। भाई हमने एक बहुत अच्छा वीडियो किया है, थैंक्स टू श्री पाटिल एंड TCSB, तो प्लीज गो एंड चेक दैट आउट, इट विल मीन अ लॉट। जस्ट गिव अस फीडबैक, because people who may not be able to kind of watch the entire series will be able to love that as well। और थोड़ा सा twist भी किया हमने, तो please take a look, it will mean a lot। But Manchester United fans, before going, don't worry, Cristiano Ronaldo looks like, as per the statement, he'll stay। Christian Eriksen, he's going to basically come on, that's going to happen any moment, you know it। Lisandro Martinez आ रहे हैं, एंटनी भी मुझे लग रहा है आ रहे हैं, yes, you heard it here। Chelsea fans, नेथन आकी तो डेफिनेटली आ रहे हैं, स्टर्लिंग तो डेफिनेटली आ रहे हैं, नो टू वेज अबाउट इट। उसके बाद में आई एम नॉट टू श्योर, लेकिन गिव आवरसेल्व्स अ चांस, हमारी स्क्वाड है प्रॉपर, एंड दैट्स समथिंग दैट वी विल बी यूजिंग मच एज वेल। एंड बार्सिलोना फैंस भाई, आपको तो कमी ही नहीं है, काफी प्लेयर्स चाह रहे हैं आपके आने के लिए, नो प्रॉब्लम, एंड रेस्पेक्ट टू बार्सा एज वेल यार, अगेन डू वॉच बिगनिंग एंड लेट मी नो योर थॉट्स एज वेल। बट यस, रॉबिन सिंह इन द हाउस, बिग अप कर देते क्विकली, और मैंने किया था रॉबिन सब कवर, तो प्लीज चेक करिए, and to join us on Almighty Sports Plus, hopefully या 11:30 बजे हो जाएगी हम, लेकिन see you soon, love you all, and don't forget we have a membership open as well।